Thanks. Thank you. I've been hosting since the last 2-3 months. This is the first time. And 7 people are like, oh, okay, cool, host has come. We should probably do something. So it's good. It's good. Welcome. Welcome. I see a lot of new people. How many of you are doing this for the first time? 1, 2, 3. There's one more person on the list. Yeah, one more person. Oh, okay. Okay. I thought kaha chale gaya first time. Okay. My name is Harsh. Before I forget, because I've forgotten when I was host. My name is Harsh. I'm going to be a host for tonight. It's going to be fun. Huh? I know आसपास देख के it's just forget it. ठीक है? Today इतना ही है कि मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बाकी टीम है अपनी. ठीक है? तो मचाओ. Have fun. This is it. Thanks. House party. हार में हम लोग मंडे रात शाम को हाउस पार्टी कर रहे थे. It's a good start to an evening, I guess. But welcome. I just want to find out how's the Monday going. Sir, आपका Monday? Okay. Okay. Very good. That's very rare. Monday को. Words भी use नहीं किया. You were like आँख में. Sir आपका. Worse. Okay. Nervous. मेरा worse दिन है आज. हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. Sir आपका? नहीं. आपका Monday कैसे चल रहा है? Oh, best. Ma'am. Okay. Very good. That's nice, sir. अच्छा ठीक है sir. Ma'am. Awesome. Wow. Okay. So mixed response. Okay. I hope you guys go back with more. I hope you have fun. You learn if you or observe or just meet people and tell them you like their work. If you like their work, I mean, you'll figure out. The open mic hai, as usual. Okay. Few rules. I'll begin with that, and then we can start whatever. Okay. First rule is you get 4 minutes. 3 minutes 30 seconds में there'll be a light behind. I know there's a lot of flash, but उसके पीछे ना एक thin सा एक line आएगा पीछे. If you look behind that one, so वो 3 minutes 30 seconds पे आएगा. That means you have 30 more seconds. आपको 4 मिनट में 4 pieces करने हैं, 6 करने हैं, but 4 minutes only because we have to respect everyone's time and everyone should get a fair chance to perform since you're here, whether it's first time or 10th. 4 minutes, okay? Please. अगर बच गया टाइम तो बाद में देख लेंगे क्या करना है. ठीक है? वैसे ही हाउस पार्टी है तो देख लेंगे. Second is have fun. That this is my personal. It's not a rule, but it's like I'm just suggesting. I'm just telling you have fun. Whether it's your first time or 10th time again, you will feel equally nervous. But that's the joy of coming here and doing this. And the fact कि तुमने choose किया है to come here and share, it'll be fun. It'll generally be fun. If you fumble in between, do anything, it's fine. Just fuck up. It's fine. It's an open mic. You'll see me do all of this throughout the next 2 hours, maybe. So it's a place to learn. It's a place to express. We start here. We aim to keep performing. Hopefully, have paid shows. Be a performer. So it's all a process. So if you fumble in between, you want to start again. It's fine. Everyone's very forgiving. I've realized that people are very nice. You should just trust them. People say, Ada, if you're a first time, you're not a first time. If you feel very nervous, just say you're a first time. ठीक है? In the crowd. पता है लोग को people feel appreciative क्या first time कर रहे तो होगा यार अच्छा तो कर लेते तो just say it, it's fine. Just fake it, it's fine. Main thing, please cheer. I know हम इतने ही हैं, ठीक है? इतने में भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, okay? Let's do a trial, sir. Let's do a trial, okay? I will call someone, okay? Pretend मैं किसको बुलाने वाला हूँ. You guys have to throw your energy. Pretend like they're your best friend, ठीक है? 2 घंटे के लिए चलेगा. We've done. Okay, let's not get there. Okay, so. क्या बात है यार कभी भी 30 लोग आ जाते इतनी आवाजें आती है. So this is nice. It's very nice. It's very good energy. Right now we have a good energy. Yeah. So we'll start the open mic slowly. I'll keep calling people. You have to cheer. As soon as they go, cheer. ठीक है? Lose it. Yes. My name? Harsh. Thank you so much for asking. So my name is Harsh. I'm going to be a host for tonight. So yeah, I'll keep calling people. Cheer when they come, cheer when they go. If you like their work, specifically talk to them after the show. It really helps. A lot of people have met each other and over 2 weeks they've collaborated and done a piece over here. So you never know what comes out. We will be streaming this on our YouTube channel. So if you haven't like, share, subscribe, do the needful. Instagram तो तुम देख के आ गए होगे. तो it'll be streamed there. You will get a link on your DM from Habitat 2 to 3 days के बीच में. Photos and this. For people who come here regularly, they know, but for just people who are new, because like once someone had texted us at 6:30 in the morning, the next day. Photos किधर है?
मैंने अरे भाई दिन चालू नहीं हुआ कुछ पता ऐसे यार फोटोज तो विल सेंड इट डोंट वरी एवरीवन्स फोटोज विल बी क्लिक ठीक है सबको मिलेगा कोई टेंशन नहीं सब ओह मैन सबकी हाँ सबकी डीवी बनेगी इट्स नाइस इट्स वेरी फैमिलियर टू बी लाइक ओ उसके प्रोफाइल मेरे प्रोफाइल इट्स विल ऑल परफॉर्म्ड at the same place. So yeah, that's it. I'll keep coming in between and talking. I want to talk about something fun that happened to me recently. I'm sure you guys have also been a part of that. But we'll come to that. अभी के लिए चालू करते हैं, ठीक है? Are you guys excited to be together? Yeah. Yes, yeah, that's it. That's nice. Okay. Cool. We have first time performer, first person. Okay, so you have to go mad. Okay, like just lose it. Should be like 70 people there. ठीक है यहाँ पे. So we'll start now. Okay, you know what to do. Start clapping. Start clapping. Go on. First of all, go on. So please have Rahul all the way from the second row, guys. Go on, keep lose it. शुक्रिया. कोई कह दो मेरी मोहब्बत से कि वो तेरा इंतजार कर रहा है. सुबह के चाय में, दिन भर की अंगड़ाई में, ठंडी की रजाई में, पीठ की सफाई में, रोटी के गोलाई में, स्वाद के बड़ाई में, फ्रिज के बोतल भराई में, मंथ एंड के पाई में, तेरी तमन्ना लिए वर्षों से हर सोम से इतवार कर रहा है. कोई कह दो मेरी मोहब्बत से वो तेरा इंतजार कर रहा है. हर वैक्सीन दवाई में, सरकार विपक्ष लड़ाई में, मोदी के बुराई में, दरवाजे की कुंडी लगाई में, चोटी के बंधाई में, त्योहारों के बधाई में, दोस्तों के शादी सगाई में, बाहों की तन्हाई में खुद को तेरे लिए तैयार कर रहा है. कोई कह दो मेरी मोहब्बत से वो तेरा इंतजार कर रहा है. टेबल से किताब हटाने को, तकिए पे ख्वाब दिखाने को, आंखों से शराब पिलाने को, रात को बत्ती बुझाने को, थोड़ी आलस बढ़ाने को, हाथों की रेखा मिलाने को, बेमतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाने को, ऊट पटांग फोटो खिंचाने को, बचकाना रील्स बनाने को, कुछ गाने साथ में गाने को, रोजाना शायरी सुनाने को, वो पन्ने गुलजार कर रहा है. कोई कह दो मेरी मोहब्बत से वो तेरा इंतजार कर रहा है. लटों को सुलझाने को, उसमें अंगुली उलझाने को, पवित्र अंगूठी पहनाने को, एक थाली में जूठा खाने को, जोर से गले लगाने को, तुम्हें अपना बुलाने को, तेरे मुस्कान में नहाने को, बात बात पे चिढ़ाने को, मैचिंग कपड़े मंगाने को, तेरे संग डीपी लगाने को, तेरे सपनों से भी प्यार कर रहा है. कोई कह दो मेरी मोहब्बत से कि वो तेरा इंतजार कर रहा है. घर के पूजा पाठ में, हर साल छठ घाट में, हुडी के बंदर बांट में, भीगे तौलिए के जज्बात में, वैलेंटाइन के सौगात में, इशारों वाली बात में, तुमसे इजहार को बेकरार वो गुजारिश बार बार कर रहा है. कोई कह दो मेरी मोहब्बत से वो तेरा इंतजार कर रहा है. क्या बात. Thank you so much, Rahul. ऐसा लग नहीं रहा था तुम्हारा first time है, because generally first time we all have experienced, who have experienced first time, it's crazy, right? So that was really cool. So can you please? Okay, I'm just gonna. Guys, I want to talk about a really important thing. Okay, I'll have to sit for it. I want to talk about a trend that's been going on for a while. Okay, it's been going for generations together. Okay, I'm not talking about reels or TikTok, it's the same thing. Talking about the one and only trend that's been going on even before we all were in this room. Sorry, did anyone say? No, okay, fine. Okay, I'm talking about weddings. Did you see this? I mean, weddings have been the biggest trend than reels. Like reels is nothing in front of weddings.
weddings are amazing. How many of you? I know Rakesh is married. Anyone else is married? नहीं. Sorry. Sorry. Okay. You guys are. Who else is? No one else? What happened, guys? क्यों नहीं की शादी? Motivation तो बहुत था, ठीक है? Instagram में बहुत. Like I wake up anywhere between 12 to 2 in the afternoon, okay, every day. No shame, guys. It's fine. Look at me the way you want to. And I can't decide what I want to eat or what I want to do, okay? And two of my classmates from college and school are married already. By 12 in the afternoon, they've started a new life, and I'm still waking up and I'm like, fuck, आज क्या करना है यार? आज कुछ खाने का देख लेते हैं. That's my priority right now. But it's crazy, right? Like, I'm sure it's not just me. You guys saw a lot of weddings, if not real, on Instagram at least, right? All of your classmates, everyone got married. But did you guys ever feel like, or was it too much? Too much? You can say it's too much. हम कोई मतलब, did anyone get lockdown married? Did you guys? आपका तो पता है. Did you guys get married in the lockdown? Depends. Lockdown आप किस period तक? एक महीने हुआ. एक महीने पहले हुआ है. Okay. So then you guys are included in this conversation, but I'm not talking about you guys. Everyone else except you guys. नहीं. But was there a plan and then it got delayed because of COVID? Or अच्छा, COVID में ही सब decide हो. Okay. So one of them. Okay. Positive. COVID की वजह से. Yeah, I feel like people got time, and like I don't know about you guys. I'm not talking. Let's assume every conversation is out about you guys. So I don't know what happened. A lot of my classmates who like suddenly were like, "अच्छा इसकी भी शादी हो गई." Have you ever come across those people where two people in your school, the most polar opposites, got married from school? And I'm like, really? Like both of you, 10 years later, this is what had to happen. You both had to come back after a bad school experience to come back and be like, we both should do this. But I'm not cynical. It's just that it's just too many weddings, dude. Too many. God. And so I'm from Bangalore, not from Bombay. So when I went back in lockdown, when I was at home, मेरे घर के पीछे की तरफ एक मंडप है और सामने एक मंडप है. So every night there's a crazy, and what social distancing? What? I mean, this is getting streamed. I'm sure they were guys, but I didn't see any people. Yeah, it was crazy. But yeah, I didn't feel like getting married because it was too much, right? Yeah, you also have to find someone for that. You can't just be like, hey, I want to marry. I don't know what, how, when. But it was what it was. That's it. I don't know where to go from here. Because like I have so much to say, but ho gayi shaadi abhi. Congratulations ही बोलना पड़ेगा. Something more you can. But that was very interesting. ठीक है आप मारेंगे हो. ठीक है. नहीं मेरा ठीक है. I can't even tell my parents मेरे वो दोस्त की शादी हो गई because they'll be like okay. So I'm like नहीं किसी की शादी नहीं हो रही है मेरे ग्रुप में से. And they're not even trying to. I mean, our parents have given up now. I don't know how many of your parents have given up. They've tried. They've given up like a while back. They're like शादी करेगा. I'm like नहीं. They're like okay, cool. I can't say anything. It's weird. But ठीक है. I'll come back. We'll come back to weddings because it's a. I also attended a wedding. How many of you attended like weddings? Let's do a thing. Okay, let's do a survey. I want to know who has attended the maximum weddings. Okay. नहीं अभी यही पीरियड में सिर्फ लास्ट 2 years में I'll go eventually, but how many have you attended any wedding? Nothing? Oh man, good. 3, okay. 0, okay. I like the pride. 0, okay. 0, huh? 1, okay. 3, 0, 3, okay. I'll come back to the last row after the second person. But that's crazy. So right now there's only 3 is the maximum. पीछे वाले रो का देखते और कितना. मेरा भी 3 ही था. One wedding I shot at the beginning of the year. One was my cousin's wedding and one was the friend's wedding I attended last month. That's only 3. I didn't get invited to the others. It's not like I wanted to go and I just didn't get invited. And I've given up on that. My class, like as soon as I did degree, a lot of my classmates are getting married. So थोड़ा बहुत वो रहता है कि we just got to know each other, man. You know, invitation, all of that. Now I stop caring. I'm like, it's get married, good. I'll see you maybe. We'll see. Cool. I'll call the next person. We'll come back. We'll do this, okay? Are you guys excited? Feeling it? Second person also is first time, guys. First time. Lose it. Okay, keep going. Can we please have Bhavishya? Bhavishya, guys. Bhavishya.
Okay, so hi guys, my name is Bhavishya and I'm from Jaipur. मुझे कूल बनना था, मैं रह ही रहा हूँ, ठीक है. आया नहीं जयपुर से. So after इतना अच्छा ह्यूमर, I'll be reciting out like 2 poems which are in Hindi and बहुत क्लीशे प्यार पे, ठीक है. तो दोनों प्यार पे. जिंदगी में नहीं है, पोएम है. So the first poem is all about like it was like the first poem which I wrote in Hindi and it consists all about like कैसे हम सब कुछ नहीं लिख पाते, ठीक है. And it was about the feeling कि how can I not write this feeling, ठीक है. So yeah, here we go. सब चीज़ें लिखी थोड़ी जा सकती है. सब चीज़ें लिखी थोड़ी जा सकती है, जैसे कैसे तुम्हारे बालों की खुशबू मेरी टी शर्ट से चिपक जाती है और तुम्हारी उंगलियों के निशान मेरे बदन पर जो रह जाते हैं, ये लिखा थोड़ी जा सकता है. कैसे मेरी उंगलियों के बीच का खालीपन तुम्हारी जुल्फ़ों से भर जाता है और कैसे चमक जाती है आंखें तुम्हारी और मेरी अंधेरे में भी, ये लिखा थोड़ी जा सकता है. तुम क्या हो यार, कौन रोता है यहाँ किसी को रोता देखकर, जहाँ कोई किसी को खुश देखकर भी खुश नहीं रह पाता. कैसे तुम्हारे माथे की हर सलवट को चूम कर मैंने उन्हें अलविदा कहा है और कैसे मेरी ज़िंदगी के हर अंधेरे में तुम्हारी जुल्फ़ों की छाँव ने सवेरा किया है. अब ये सब लिखा थोड़ी जा सकता है. मेरा हर रात किसी बात पर बिगड़ जाना और अगले सवेरे तुम्हारा मुझे फिर से बना देना और वही पुराने पार्क में जो कि चारों तरफ बहुत शोर से घिरा है, वहाँ जाकर शांति से 2 लफ्ज़ बांटना और चलते चलते तुम्हारे हाथों का मेरे हाथों से टकरा जाना और फिर मुस्कुरा देना मन ही मन में. अब ये सब शायद लिखा थोड़ी जा सकता है. मेरे कदमों का तुम्हारी गली से जो इश्क है और मेरी नज़रों का तुम्हारे काजल पर फैल जाना, ये लिखा जा सकता है नहीं, मैं नहीं जानता. और ना ही मैं ये जानता हूँ कि कितनी बातें होती है जो लिखी नहीं जा सकती. मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो, लेकिन तुम कितनी खूबसूरत हो ये लिखा थोड़ी जा सकता है. मेरे दिमाग में टाइमर चल रहा था, शायद नहीं हुआ टाइमर. एक और पोम हो सकती है. मल्टीटास्किंग. हाँ, ये लिख दिया गया है. थैंक यू. सो दूसरी भी प्यार पे और इसका मतलब टाइटल है कि तुम हो, लाइक इट्स जस्ट लाइक यू एग्जिस्ट, ठीक है. एंड मे बी दैट्स इनफ. या तुम हो बस तुम हो. कितनी सारी जगहों पर तुम हो, भरी हुई जगहों पर भी, खाली जगहों पर भी. होकर भी तुम हो, ना होकर भी तुम हो. मेट्रो की सीट पर जो 2 लोगों के बीच की खाली जगह है, वहाँ तुम हो. सुंदर मगर बहुत महंगे से कैफ़े में जो टेबल की दूसरी तरफ की खाली जगह है, उस खाली जगह के भर जाने के इंतज़ार में तुम हो. फिर चाहे गर्म कॉफ़ी से जीप को जलाने में हो या सिगरेट के धुएं से फेफड़ों को जलाने में हो, मैं जानता हूँ कि तुम हो. मेरी चुप्पी के हर सच में हो, मेरी मुस्कानों के झूठ में हो. तुम मेरी चीखती चिल्लाती बेबसी की एक अलग भाषा हो. 2 मोहब्बत करने वालों को साथ देखकर सुकून मिलता है, मैं जानता हूँ, मगर जो आंखों में खटकता सा है, उस एक मामूली से दर्दनाक पल में भी तुम हो. तुम मुझ में अब इतनी हो कि अगर कहीं कोई तुम्हें पुकारे तो पहले मैं पलटूँ. तुम वो किताब सी हो जिसे मैं कहीं रख कर भूल भी जाऊँ तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ रख कर भूलूँ. तुम हो और इतनी हो कि अब जो कुछ हो तुम हो. कि मैं कुछ भी नहीं, मेरी बातें कुछ भी नहीं, ये कविताएँ कुछ भी नहीं. 2 शब्दों के बीच की खाली जगह में तुम हो. तुमसे मिलते हैं शब्दों को मतलब. तुम्हारी कमी से तो सब उल्टा पुल्टा हो जाए. तुम्हारे भीतर छिपी है मेरी सारी कविताएं. एक एक करके चुरा रहा हूँ. डर रहा हूँ कि तुम्हें कहीं खबर ना लग जाए कि मैं चुरा रहा हूँ एक एक करके मेरी सारी कविताएं जो छिपी है भीतर तुम्हारे. तुम हो, तुम थी कभी नहीं हो सकती. तुम हो और बस तुम हो. क्या बात. थैंक यू. कौन हर्ष. Enough. Can you please clap for him? Please clap for him. It's okay, guys. Thank you so much for performing. It is the first time. तुम हो, अच्छी बात है, सही है. Please continue doing this. It's amazing. Before I get into my friend's wedding, I just want to say, so basically I shoot
with a bunch of people. I shoot weddings also. I've shot some weddings also. And I started shooting weddings just in a time where I was getting out of college. I just met a bunch of people. I was like, wow, socializing is fun. I should shoot weddings. The answer is no. You shouldn't shoot weddings because, I mean, I don't know what even. It's you're called by the guy or the girl, right? And you come and shoot for their family. What does a random uncle has to do with that? I'll tell you. He wants his pictures clicked. So he'll come to you randomly and point at the camera and be like, "Acha, photographer ho?" I'm like, "हाँ बेशक." Like, "Acha, खींच लो फिर." And initially I was like, okay, you know what? Like maybe he's someone. So you need to click. तो मैंने खींच दिया. But uncle's behind me. Every part of the wedding I'm clicking and he comes in and he's like, photo kidhar hai? Photo kidhar hai? Photo kidhar hai? Wherever I go. And it's so sad because now I have to click. The bride and groom are there. The uncle's also there. More than the bride and groom. The uncle's interested कि मेरा का photo आएगा. And uncle को ना शादी करना है ना कुछ करना. He just wants to use it for whatever. But like, I'm just like, uncle priority देखो ना यार. मैं दे दूँगा आपको. उनके साथ आ जाएगा. He's like, नहीं आप अभी दो. And like they get behind you, which is one like common uncle. There's always an uncle. I don't know why. Aunties are nice. Uncle लोग का ही कुछ रहता है कि they start coming and they're like अरे ये लो ना. And then the thing is important things happening. Okay, यहाँ पे सिंदूर उंदूर लग रहा है. अभी obviously I'm supposed to be there because they will then ask me where is it. I can't believe आपके uncle लेके उनसे पूछ लो फिर. तो I have to do that. I'm in between that and he comes off and he's like मेरी पूरी family उनके साथ एक लोग आई. And I was like uncle don't यार मैं कर देता हूँ. That is one. Second is the new trend that has come, not Shadi. Shadi itself is a trend, but pre-wedding videos. Guys, we make them, and I would recommend don't make them. Because you're trying to make a trailer to a film that might not be released or whatever. Something will happen at the film. Something might happen at the film. We don't know. But the trailer is just... And the thing is, people are nice, okay? I'm not saying people are bad with what they want to do. They want to do things. Everyone wants, good. I mean, I love pictures. That's why I got into this. I love memories. But it's just that because everyone's doing it, just like Reels, if everyone wants to do it, it feels like, oh, even I want to do. So every time people, even if they don't have it in their plan, they be like, "Ye sab log kya kar rahi hai? Pre-wedding, kaise kare hum log?" And then you explain things to them. Then they seem very excited. Oh, fuck, shoot होगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे. Then you show budget, they're like, नहीं. क्यों चाहिए इतना पैसा? I'm like, अरे film बना रहे हो यार, तुम अपनी मतलब, like you need to give the basic of this, so that doesn't happen. The best part is the food, but after working for 2 days straight, when you sit down and you eat that meal, you're like, man, this is going to be fun. Because after this, editing pictures, because there are like thousands of pictures, right? And everyone gets behind you as soon as it's done and stuff like that. And it's very tedious in a way to cover a wedding because you have to deal with so many human beings, so many things, right? You have to make sure you're aware because something or the other. Wedding, and the thing is, sabka riti riwaj alag hai. And you can't read a book and be like, oh, okay, Hindu, acha, aisa. You can't just do that. Everyone, even in Hindu, there's so many different types. So it's crazy how you have to keep track. Like the one wedding we shot this year, we had to keep track कि मतलब क्या होने वाला है अगला. We have no idea what's going to happen. They did, but they were like, तुम देख लेना, हम बाहर चले जाएंगे, बाहर आ जाना, हम अंदर जाएंगे, अंदर आ जाना, हम ये करेंगे, वो कर लेना. I'm like, this is very casual. This is like an indie shoot. It's not even a wedding anymore. And we did it, and it was okay. That was still fine, but it's difficult, guys. But if any of you are looking for any photos or videos or a pre-wedding, there's also post-wedding now. There was a beach where there was a concept which didn't get that popular. It's called post-wedding. People who take videos and photos after the wedding. Now that they're together, they want to take another photo to prove that we are together. And in today's time, photo is enough, like a photo. But I don't know why they need this. Sorry, guys. I haven't been to therapy in a while. I'm just treating this like a session. All of us are friends. We can do this, okay? But cool, get in touch, okay? If anyone wants. I swear, you guys are nice, okay? Same thing won't happen. Maybe. Okay, cool. I call the next person. Then we'll see where this goes. Okay, cool. Next person. Can we please have Shifa Khan? All the way from the second row, guys. Keep clapping.
after 2 years, like the prior lockdown and now. So yeah, it's been a long time to want to stay. So I have 2 poems. My name is Shiva Khan, by the way. I have 2 poems. Both of them are in English. I tried Hindi, but I fail at it. I don't know why. So let's go for English. So okay. The first one. If my hands could talk. If my hands could talk, they'll tell you how they were made to write feelings that they did not feel at all. They'll tell you how they were forced to make promises that they couldn't fulfill. They'll scream in agony because they were forced to catch a train of thoughts that never knew how to stop. Only if my hands could talk. They'll tell you how lonely they've been. They'll tell you how they miss you by their side. They'll tell you how they crave touch even when there's nothing beside them. If my hands could talk, they'll tell you how they wipe stories from people's cheeks. They'll tell you how they rubbed off nightmares off my eyes. They'll tell you how they comforted every single person that was beside them, and yet nobody embraced them in return. Only if my hands could talk. They'll tell you how they were made to weave a tale only to have one of their own in the first place. Only if my hands could talk. The second one. I've learned to unlearn. Everyone's talking about unlearning. This is like one of the trends. Like, I've learned to unlearn, how to unlearn. So I've learned to unlearn. It's very simple. I've learned to unlove you. I've learned to unlove you in a way where I can walk back to those memories and rename them as unknown. I can walk back and scratch their name cards and rewrite them as untouchable, unworthy, not so nice, will definitely break your heart. Just meh. I've learned to unlove you in a way where I can actually go back in my mind and delete all our conversations, even from the backup. I've learned to unlove in a way where I can see myself now, but I don't see myself anymore. Because when you left, you took all of me with you. So I think it's high time you give all that back to me. Because honestly, it's on you. Get it dry cleaned so that it doesn't have your fingerprints all over it. Return me to me. And you know how to do that, right? Ring the bell once, knock twice. Wait for me to open the door. Look me in the eyes. Return all of my remnants to me and leave just like the last time. Thank you. Wow. The second piece is like, very well written though. Like, I love the whole fingerprints, like dry clean it, because it's so beautiful. Thank you so much. Can you please have a mad? Wow. That's what I love about writers. Ki right now also I can literally put a cup of chai over here and we'll still all write different things. Or like anything. I could put this writing pad, we'll still think of different things. That's what's beautiful about how all of us can still come together in one room and talk about the same thing and still feel different things. So good job everyone for coming here today. Thank you so much for performing. Cool guys, give me a cheer. Hey, complete तो करने दो यार. Cheer बोला है, clap. Who? You have to go who, okay? Give me a cheer if you, again, I've already asked you this, but I'm going to ask you again because I've written a few things. It has to go. So, give me a cheer if you attended someone's wedding. Give me a cheer if you attended someone's wedding who you knew. Give me a cheer if you attended your ex's wedding. Okay. Should I say it again? Or you heard and you said yes, no? Can we have a conversation if you're okay with it? No? I felt left out. Oh, okay. Yeah, it's fine. It's okay. अच्छा तभी इंतजार में Not me. तुम मान नहीं रहे So I went to my friend's wedding. It was my friend, but it was my friend's ex. Oh. And all of us were in one group. So it was one of those groups where all of us were friends, we stayed friends, all of that.
And they both dated for a while, for a good amount of time. It was very intense. Then they broke up, and then 2 years later, she was getting married. So she's like, I want all of you guys to be there. I was like, this is going to be the most entertaining wedding of my life. I have not attended my ex's wedding. None of them called them. Whoever got married didn't call me. Yeah, and one I really tried suggesting pre-wedding, and she was like, just get out, just leave. I'm not going to invite you to my wedding. And I was like, why? Just one shoot. It'd be damn weird, but I mean, that's a different conversation. It'd be damn weird if I landed up doing my ex's wedding and I'm doing a pre-wedding. It'd be really like just that dynamic is very weird. I don't want to give instructions. It's weird it is. But that happened. That was very exciting. I think this is the first proper friends wedding. And I tell you why proper. Because there are two types of weddings I've seen. I'm a Gujarati. There are two types of weddings I've seen. Ours has no alcohol in them. And there are many weddings which have alcohol in them. And I'm telling you, alcohol changes everything. The whole dynamic. I've seen weddings without alcohol, which is all the weddings I've been to. Because, I mean, it's a given, okay, that we don't drink in the open. So, this is the truth, but every Gujarati knows this. They just don't acknowledge it. On top of that, I'm Jain. So I'm like thanks. We're a minority. My dad kept saying we're a minority. I'm like, so many people know about us. So, I'm Jain. So people with your even do it even more. But obviously not in the open. But the wedding I attended was a Punjabi wedding in Delhi. I was like, wow, this is the perfect culmination of everything together. Because I've heard so much about these weddings, but I've never been to one. Have any of you been to a Punjabi wedding? No? Two of you. Okay, two of you. That's it. Can you please share your whatever experience you had? This is a lot of alcohol. Yeah. Every function, they're dancing. Yeah. I know, right? It was every function, and I'm like, we should do this. I don't know why we don't adapt some things from other people. We should definitely do this because our functions are very long, and there's no alcohol also. There's like the last wedding I went to in Gujarat, in short glasses with salt, they were giving guava juice. Very fancy. It's a shot. I'm like, woo, this is it. The salt was more cool than the fucking guava juice. So it was really exciting. Punjabi wedding, anything else? Alcohol is like, I don't know why, the minute you say Punjabi wedding, people are like alcohol. There's nothing else that happens. We just keep drinking. That's it. Anything else? They dance a lot. Yeah, that's crazy, dude. Fuck. It was really also cool because every wedding I've been to in Gujarati, if you say dance, they'll only do garba. They won't do any other step. Any other step. We will start a garba on any song ever. Like you can play any song right now. I'm not telling you should. I'm saying if you did, I could do garba on that song. We'll show it later. We'll do it later. But like, it's crazy. But Punjabi is mad, like just amazing. I don't know. Like it is true with whoever I've met at least as Punjabi. They're really open, really giving. They're very loving, and like they treat you like their own children that way. Because my friends' parents were like, just showering us with jo karna kar yaar those karo. It is so cool to have that kind of power in a wedding. My friends are giving jhoot jo karna karo, daru bhi hai jo karna karo, and I'm like, that's very bhari padega baad mein. And it was interesting because for my friend, because I kept looking at him and I'm like, you know where we're going, right? It's gonna be really fun. Every time I spoke to him saying I'm coming, I'm like, oh, maza aayega bahut. And he's made peace, but what are friends for if you can't remind them about the shit that they did in their lives? So I reminded him every second I got, every second. Like वो लोग अपना कर रहे हैं ना, I'm like देख ना कुछ हो रहा है feel. And he was nice about it, and they were nice about it. But what's fun otherwise? Because I wouldn't get this. I wouldn't get the alcohol or my friends, or no garba, or an open bar, or anything else if this is a Gujarati wedding. So for me, that's my only parameter. Because I've only attended. God, I'll start ranting about that now. Gujarati weddings are very fun if you're not a Gujarati. Because everyone knows you otherwise. Everyone's your brother, sister. Everyone is your relative. And relatives are the best because they have so much time in the world at weddings. They will pick at everything. I have aunts come up to me and ask me 3 times in the same day saying, what do you do? I'm like, I spoke to you. She's like, नहीं, but तू करता क्या? I'm like, I perform, I click pictures. They're like, वो सब ठीक है. करता क्या है तू? I'm like, अरे यार आंटी आप छोड़ो, बात ही नहीं करना आपसे. But I'll come back and continue what happened because a bunch of things happened, guys. It was really fun. Oh God, I wish I could play the wedding
from my head about what all I saw, because that would be really fun. But वो technology आया नहीं है. Cool. We have how many performers we have? But next person, are you guys excited? Yeah. Okay. Start clapping. Little more. Come on, guys. Can you please have Sajal? All the way from behind, guys. All the way from behind. You got married a month ago, guys. You can do it. It's good to come back to these events. हमें बहुत लोग अभी पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, हमें इतना समय हो गया, I kind of feel old when I come to poetry events. 2014 में बॉम्बे शिफ्ट होना हुआ था and I was a full-time corporate person, पूरा नौकरी वोकरी and everything, and creative aspirations थे. One of the first things that happened is these poetry events. उस समय एकदम impossibility लगता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कभी लिखने लगेंगे. अब 5 साल से वो हो चुका है. So I've been a full-time writer for 5 years. And जब वो सब कुछ नहीं था उस समय ये poetry events थे. So yeah. And this is also a poem that I've performed a few times. 2 बार तो यही Habitat में. It's kind of special. और किसी के सामने एक बार परफॉर्म करना चाहिए. So yeah. Here it goes. तुम आज ऐसे बहुत प्यार व्यार वाला सुनाया गया, but this is one more in that list. Yeah. तुम चाहत के पहले हर्फ के जैसी, तुम चाहत के पहले हर्फ के जैसी, तुम पिघले हुए बर्फ के जैसी, तुम चाहत के पहले हर्फ के जैसी, तुम पिघले हुए बर्फ के जैसी, तुझमें रेशा भर भी झूठ नहीं, जैसे कागज कोरी हो, कितनी अच्छी कितनी प्यारी, मानो माँ की लोरी हो. क्या बात है. कितनी अच्छी कितनी प्यारी, मानो माँ की लोरी हो, वो बचपन वाली भूख हो तुम, वो बचपन वाली भूख हो तुम, वो नादानों सी प्यास हो तुम, 2 मिनट मैगी की खुशबू भी हो, आई लव यू रसना की मिठास हो तुम. वो बचपन वाली भूख हो तुम, वो नादानों सी प्यास हो तुम, 2 मिनट मैगी की खुशबू भी हो, आई लव यू रसना की मिठास हो तुम लूडो में 6 आ जाने की खुशी, तुम लूडो में 6 आ जाने की खुशी, तुम स्नेक एंड लैडर्स की सबसे लंबी सीढ़ी हो, कितनी उम्मीदों से तकता हूँ तुम्हें, मानो तुम आने वाली पीढ़ी हो. कुल्हड़ वाली चाय हो तुम, कुल्हड़ वाली चाय हो तुम, वो बेईमानी वाला बाय हो तुम, कुल्हड़ वाली चाय हो तुम, वो बेईमानी वाला बाय हो तुम, उगते ढलते सूरज का अंबर हो, तुम स्टिप मार्क्स वाला नंबर हो. क्या बात है. गहरी बात. समंदर किनारे बिकता गुब्बारा हो, तुम बीमार रात में ढलता पारा हो, बचपन के प्यार का यूं ही किया जिक्र हो तुम, और मम्मी पापा के लिए की गई फिक्र हो तुम. क्या बात. छुट्टी वाली घंटी हो तुम, छुट्टी वाली घंटी हो तुम, जाने कैसे बनती हो तुम, जो तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो, 10वीं की परीक्षा की तैयारी हो. So, ये कविता अब तक जब भी सुनाया करते थे, यहाँ पे ये लाइन आता था कि बच्चे का पहला कदम हो तुम, गरीब पे दिखाई रहम हो तुम दुनिया की तमाम अच्छाई, लोग लाख कहे मेरा वहम हो तुम. So it used to be the twist and it was like आगे it has, मैं जानता हूँ तुम जीती हो इस जहाँ के किसी कोने में, यकीन पे अपने यकीन है मुझे, है भरोसा तेरे होने में. क्या बात. And अब ये एंडिंग थोड़ा बदल गया है. So this year I met someone, it's moved forward and yeah. So ये नया एंडिंग, कुछ लाइंस. गरीब पे दिखाई रहम हो तुम, बच्चे का पहला कदम हो तुम हो दुआओं का असर होना, तुम हो दुआओं का असर होना, तुम नेमत तुम तोहफा, तुम्हें पता है करम हो तुम. पहले थे शायद कुछ तो कम दोनों, पहले थे शायद कुछ तो कम दोनों, अब मुकम्मल से लगते हैं हम दोनों. क्या बात. क्या बात. कुछ पाक सी तुम, कुछ खरा सा मैं, थोड़ी सी तुम और जरा सा मैं. यार प्लीज कम ऑन.
मजा आ गया. One, please do one proper round of applause for both of them and for him. This is what I love about poets. One draft, and second draft, like all changes. Final draft एक खत्म अभी तो. That's beautiful. Thank you so much for performing. Was this the first time you actually performed this piece? पहली बारी वाला? No, but in front of her. Oh man, thank you so much for performing, ma'am. I hope you मजा आया आपको. Do you also write, perform or? So I am basically from IT. So I work Okay. there, and I am a theatre actor. That's lovely. I did theatre for a couple of while. Are you still doing it? So for a couple of years, I have not been able to in touch. Okay. But I am into this since '96. That's mad. I was born in '94. That's mad. Good, really good job. I really hope you find the stage soon and get back to theatre. I think it's a great medium. Before I continue, I want to ask for all the new people who came. How many weddings did you attend? 0? Okay. You feel a little this guy was like, ma'am, how many? So I was just asking people, how many weddings have you attended in the last, like since lockdown? Have you attended any? I guess 2 or 3. 2 or 3 are also basic. Okay. Abhi last one, ma'am. You? So it was Excluding yours? That's not counted. excluding mine. It was 2. So Okay. we with you, and then Bengali wedding I attended. इनका कैलकुलेशन अलग है थोड़ा. ब्रैकेट में लाइक आर वेडिंग ऑल्सो. ओके. 2 अपार्ट फ्रॉम योर्स. सर आपका भी इतना ही था? 2 कि ज्यादा था? मेरा एक मेरी शादी से पहले से है। ओके. मैं 5 गया था, 2 की तो इंस्टाग्राम स्टोरी देखी है। आजकल ये भी हो गया. बस अच्छा. मैम, हाउ मेनी वेडिंग्स? 3. ओके मैम. ओके. इज देयर एनीवन एल्स सिटिंग? ओके. 2. आप ही हो फिर लीडिंग. 5. वाह. ओके. But that's what's fun. I realize when you don't have to do work, when it's not your घर की शादी, when तुम बाहर के हो एकदम और सिर्फ तुम देखने आए हो और खाना खाने आए हो, बस बेस्ट. I would love it when my dad would get these invites. जहाँ पे 500-600 लोग हैं, फर्क ही नहीं पड़ता कौन आया कौन नहीं आया. And dad would take me to these really fancy weddings, and he would be like, जाओ मजे करो, eat. What else? Eat. These people don't know you. I'm going to go on stage, so like figure out. And I think it was really exciting. Until now, people start getting married. But no one, it's okay. ठीक है, next one is the first time performer. You know what to do. Go. Can we please have Kunal? Kunal, all the way from second हो गए. चेहरे पर चेहरे लगाने वाले, चेहरे पर चेहरे लगाने वाले, काँप रहे हैं हमें आजमाने वाले. कि चेहरे पर चेहरे लगाने वाले, काँप रहे हैं हमें आजमाने वाले, और हम तुम्हें. सर को देख के नर्वस हो रहा हूँ. वापस बोलता हूँ कि चेहरे पर चेहरे लगाने वाले, काँप रहे हैं हमें आजमाने वाले, और हम तुम्हें नजर नहीं आएंगे दिन भर. घर लेट पहुंचते हैं घर चलाने वाले. घर लेट पहुंचते हैं घर चलाने वाले. और मेरा नाम कुणाल प्रजापति है. मैं थोड़ा बहुत जाना जाता हूँ पेट्रियोटिक पोइट्रीज के लिए. मुझे स्विच करना है वैसे तो क्योंकि चलती जो आप लोग की चलती है जो. ठीक है. एक रोज मैंने एक सपना देखा, और सपने में जो भी देखा रात भर वो मेरे जहन में चलता रहा, और सुबह होते ही वो मेरे दिल में उतर गया. तो मैंने सोचा इसे लिखा जाए. तो मैंने एक कागज पे कलम से लिखा उसे. तो वही आज सुनाना चाहता हूँ. कि रात गर्व सी थी उन पलकों की दीवारों में, मैंने कल खुद को देखा वर्दी और सितारों में. क्या बात है. कि रात गर्व सी थी उन पलकों की दीवारों में, मैंने कल खुद को देखा वर्दी और सितारों में. चिंगारी से आग लगी वो राख वहाँ की बेहद है, खून जमे हैं जिसके दिल में, हाँ वही तो सरहद है. चुटकियाँ नहीं आना पड़ता क्योंकि हिंदी पोइट्रीज में चुटकियाँ थोड़ी डिमोटिवेट कर देती है. तो
तो कैन यू कि चिंगारी से आग लगी वो रात वहां की बेहद है, खून जमे हैं जिसके दिल में, हाँ वही तो सरहद है। और बुझते हुए चिरागों से हमने आग लगाई है, छाती पे पत्थर घिस घिस के हमने किस्मत पाई है। कि हौसले शेरों से दिखे माँ के उन बंजारों में, मैंने कल खुद को देखा वर्दी और सितारों में। मैंने कल खुद को देखा वर्दी और सितारों में। कि आवाजों से बात करो ये दिल के आलम गहरे हैं, ये हीरो के अंदाज नहीं ये वीरों वाले चेहरे हैं। कि आवाजों से बात करो ये दिल के आलम गहरे हैं, ये हीरो के अंदाज नहीं ये वीरों वाले चेहरे हैं। हिम्मत की कहानी लिखी हुई थी वीरों वाली छाती पे, कितना सम्मान मिला होगा उस दिल को जो रोज रेंगता माटी में। कि ये हौसले इतने बुलंद की कल आऊंगा अखबारों में, मैंने कल खुद को देखा वर्दी और सितारों में। मैंने कल खुद को देखा वर्दी और सितारों में। कि कुर्सी की आजादी लेकर तुमने मजहब सारे बांट दिए, कि कुर्सी की आजादी लेकर तुमने मजहब सारे बांट दिए। सीमा पे आके देखो हमने 20-20 को काट दिए। क्या बात। कि सीमा पे आके देखो हमने 20-20 को काट दिए। कि हमको भी आदेश थमा दो कि अब घाटी गैर नहीं होगी, हमको भी आदेश थमा दो कि अब ये घाटी गैर नहीं होगी। और जहां तिरंगा नहीं दिखेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं दिखेगा अब उनकी खैर नहीं होगी। अब आग दिखाई देते हैं उन लोहे के औजारों में, मैंने कल खुद को देखा वर्दी और सितारों में। कि मैंने कल खुद को देखा वर्दी और सितारों में। कि एक 2-3 साल का बच्चा है, उसकी माँ उसे रोज बोलना सिखाती है, पापा मम्मा पापा मम्मा। वो मम्मा बोलना सीख जाता है, पापा नहीं बोल पाता। अगले दिन उसके ही घर पे उसके पापा का शव आता है, बच्चा चीख चीख कर बोलता है पापा पापा पापा। उसी 2-3 साल के बच्चे का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। कि लहू में लिपटी मशालों में और विजय पतंगों में देखा है, कि लहू में लिपटी मशालों में और विजय पतंगों में देखा है। मैंने वीरों को कफन में नहीं तिरंगों में देखा है। कि मैंने वीरों को कफन में नहीं तिरंगों में देखा है। और लिपटी आग ने मेरे घर से बगावत नहीं की, माँ ने दिए जलाए पर सजावट नहीं की। माँ ने दिए जलाए पर सजावट नहीं की। और गाड़ दिए हैं झंडे तेरे सरहद की दीवारों में, मैंने कल खुद को देखा वर्दी और सितारों। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Again, didn't feel like that was the first performance. That was crazy. Yeah, mad. मतलब मुझे लगा एक पॉइंट पे इनकलाब जिंदाबाद बोल देगा. Like it was full like अभी तो very good, very impactful. Thank you for saying those things. I feel like as artists we don't have the responsibility, but we take the responsibility to speak about what's happening, what's not. And also you've been seeing in the current light of our country what all has been going on. That also translated last year to our venue. If you know, you know what happened. So it was crazy. So I feel like it's us in a way. Like you said, people are doing, the forces or police or government are doing their job. I mean, doing good or not, we know, but they're doing their job in whatever way. And so is our job to speak up about what's happening, because we are a reflection of society in a way, all kinds of artists. So it's cool that you guys talk about it, acknowledge it, because it needs to be acknowledged. So thank you so much for clap this side. देखो यार, मेरे लिए बजाना है, बजाओ, चलेगा, it's fine, okay. But for people, go wild, go mad, ठीक है. They should feel like this is their best performance, because it was so far, right? It's not like that. Be like, hey, तो कुछ भी कर. It's nice, it's great, and it's really nice that all of you are being appreciative and doing this. So good job. Before we continue, how many of you just perform? Your audience. How many of you just audience? Just audience. Can you raise your hand? Just read hands. Okay. Can everyone just clap, please? Like I always say, we can keep doing this all night. We'll never get bored. But the fact that audience comes is the reason we are able to voice out our opinions and talk about things we want to talk about. And also it reaches to many people. So thank you for choosing to come and spend Monday evening with us, no matter how Monday went.
ठीक है हाँ यार सबका मंडे आई डिडंट आस्क दो वेट हाउ मेनी ऑफ यू केम लेटर हाउ आई आस्क्ड हाउ योर मंडे वाज आई ओनली आस्क्ड सर आपका मंडे कैसा था लास्ट रो में या अच्छा बैठ जाओ कोई टेंशन नहीं अरे इट बिकेम अ क्लास आई एम नॉट a teacher guys just a host not taking there was an open mic where it felt like if I told them cheer they'll be like I'm like cheer karo yaar and you clap also clapping has this thing which I've noticed one person claps people feel nervous they're like should I clap should I not clap it's up to you okay for me for performance please do it really helps cool next person yeah ready okay cool start can you please have Ria first row guys first row keep clapping Hello everyone. So basically I'm from Nagpur and whenever I tell my mom that I'm going for a poetry session, she's always like, क्या पोइट्री गाने जा रही है क्या मिल रहा है देखो वहाँ पे and I always tell मम्मी पोइट्री गाना नहीं होता है वो रिसाइट करना होता है. So whenever I come here, apart from performing, I come here to observe people and learn something ki how are they performing and how can I improve myself. So I might not be that good as you all people, so but just okay. So I'll start. Our restless hearts met in such a way as they were never apart. You got lost, so did I, as we move ahead in the same path. मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा हर कब कहाँ कैसे से परे उस जहाँ में जहाँ वक्त की कोई पाबंदी ना हो जहाँ बिछड़ने का कोई रिवाज ना हो जहाँ हमारी खामोशियाँ भी आपस में कुछ ऐसे बात करे जैसे आज तक अल्फाजों ने अपना काम ही ना किया हो. जिंदगी ने मुझे तुमसे तब मिलाया है जब मैंने शायद खुद पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था. राहों में खुद को कैद कर कर मंजिलों से मुंह मोड़ लिया था. तुमने ही मुझे वापस लोगों पर भरोसा करना सिखाया है और वो तुम ही तो हो जिसने मेरी मासूमियत को मुझ तक वापस लौटाया है. तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे में मैंने जाना है कि सुकून से मुलाकातें भी होती है. तुम जब साथ होते हो तो लगता है कि हर मुश्किल आसान होती है. खैर तुमसे कहने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन हम दोनों के पास ही वक्त की कमी है. लेकिन दिल को ये दिलासा है कि तुम हो और तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफ़ी है. तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफ़ी है. कभी कभी ही सही लेकिन तुमसे होने वाली वो थोड़ी ही बातें मुझे कितना खुश कर जाती है मैं शायद ही कभी तुम्हें बता पाऊँ. क्योंकि हर उतार चढ़ाव हर मुश्किलें हर मोड़ से परे तुम मुझे एक मंजिल की तरह मिले हो जो मंजिल मुझे बेहद करीब मेरे बहुत बेहद करीब है. तो इस मंजिल तक अगर जाने का रास्ता इंतज़ार है तो मुझे तुम्हारा इंतज़ार ही सही. Thank you so much, Ria. Today, in a way, the theme has been love. In a way. दो हफ्ते पहले it was full heartbreak. Every second person who came was it randomly came a theme कि मतलब ये heartbreak वाला. And I was like, we should do another open mics just for heartbreak and just for love. Full house. There'll be enough. Like there'll be lines. They'll be like मुझे. It's going to be fun. I think we should try it. It'll really be fun. We'll give tissues, guys, for the heartbreak one. It'll be really needed. Cool. I think 3-4 more performers. That's it. You can go home then. यही तो है मतलब Monday खत्म guys खत्म. Cool. We'll have the next person. Yeah. Okay. Great job. Start planning. Can you please have Amrit? तो जब कभी ऐसे आंख बंद करते हैं अपना वो घर याद आ जाता है बचपन वाला. तो उस पर कुछ लाइंस हैं कि अब धूप भी थोड़ी ठंडी थी, अब धूप भी थोड़ी ठंडी थी, सड़कों में भी कुछ नरमी थी. अब धूप भी थोड़ी ठंडी थी, सड़कों में भी कुछ नरमी थी. एक भीनी यादों की खुशबू हर जगह लगा अब फैली थी. आंखें खोली,
आंखें खोली तो सुन पाया क्या है जो ये दिल कहता है। आंखें खोली तो सुन पाया क्या है जो ये दिल कहता है। पहले मैं घर में रहता था, पहले मैं घर में रहता था, अब वो घर मुझ में रहता है, अब वो घर मुझ में रहता है। नेक्स्ट पीस है आसमान पे। मतलब क्या है ये आसमान कि जिसमें ये शामिल फलक और ज़मी है, जिसमें ये शामिल फलक और ज़मी है, जहाँ हर अंधेरा है हर रोशनी है। जिसमें ये शामिल फलक और ज़मी है, जहाँ हर अंधेरा है हर रोशनी है कैसा निराला खुला आसमां ये, समेटे है सब कुछ पर खुद कुछ नहीं है। बैठे हैं सब यूं ही सपनों किनारे, बैठे हैं सब यूं ही सपनों किनारे, तू फैला ले बाहें ते सबको पनारे। बैठे हैं सब यूं ही सपनों किनारे, तू फैला ले बाहें दे सबको पनारे। सितारे जो बनते हैं बनने दे सबको, सितारे जो बनते हैं बनने दे सबको, बन जा तू प्यारे खुला आसमां रे, बन जा तू प्यारे खुला आसमां रे। ये है वक्त पे कि ऐ वक्त ज़रा रुक रुक कर चल, कुछ बातें दिल की फिर कर लूँ। ऐ वक्त ज़रा रुक रुक कर चल, कुछ बातें दिल की फिर कर लूँ। ऐ वक्त ज़रा रुक रुक कर चल, कुछ आँखों को फिर नम कर लूँ। बीते लम्हे हूँ भूल चुका, बीते लम्हे हूँ भूल चुका, हैं यादें सब धुंधलाई सी, कहीं भूल न जाऊँ ये भी पल। ऐ वक्त ज़रा रुक रुक कर चल, ऐ वक्त ज़रा रुक रुक कर चल। और ये गाना है सज्जाद अली का, ये मेरा मन कर गया था कि ऐसा कुछ गुनगुना दूँ। आप लोगों ने सुना होगा लगाया दिल, तो उसकी कुछ लाइंस हैं, और नहीं सुना तो प्लीज़ सुनिएगा, बहुत प्यारा गाना है। वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको दिखा नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। थैंक यू, शुक्रिया। यार ऐसे नहीं चलेगा यार, थोड़ा अरे बंदे ने पोएट्री की फिर गाना भी गाया यार, ऐसे ऐसे यार, मतलब थैंक यू अमृत, एज ऑलवेज thank you. I love listening to him, and it's been a while I've been, so it's really cool to see him come back and do this like this. I hope to see all of you who have come for the first time all over again. It's going to be fun. ठीक है, first time performer, you know what to do. You know what to do. Okay, we'll go crazy. Can we please have David all the way from the first show, guys, all the way. Okay. Wow, there's a lot of people. Yeah, sorry. So this is my first time doing this. This is completely outside my comfort zone, and yeah, in my head I thought of like, you know, a lot of cool things to say, but now I'm standing up over here. Everything. But yeah, but the people who performed before me, I mean, the way y'all did it with confidence, y'all made it look really easy. Now standing up over here doesn't seem... Okay, the other reason I'm wearing your hoodie so y'all don't see me shivering completely under this, so that's just to... It's a emotional cover. Anyway, so this, like I said, this is my first time, and my name is David from Mumbai. I'm a Bandra boy. So I am going... My poem is in English, and
So today being the first time, I started panicking because I think Habitat had posted a couple of times before and I mentioned the comment, but I never got really selected. So today, I think yesterday they said, okay, fine, you're going to be like, we've selected you. So I started panicking. I started watching all their videos on open mic poetry to see like, how everyone does and what the process is. Anyway, so I was trying to think and like, the pressure started increasing. I started thinking, okay, now what am I going to say? And because I usually write like 14 to 15 lines at least, not really that long of a poem. So while thinking of what to write, what to say to you guys, it's kind of broken into two parts. I wrote this today itself only. Sitting and thinking on what to share. Something I've already written. I know I have something good there. I locate them all and start sifting through, reading each one, both old and new. Now here's one important detail I must point out. I think 10 times over before sharing anything out loud. Do I come across creepy or extremely sad? Do I come across lonely? Probably a tad. But no matter what I conclude with, it's never positive because I expect the worst despite my hopeful motive. My writing process is probably the most basic you've seen. A thought pops into my head and I find a rhyme and then the poem starts to seem. I was thinking of sharing something funny to make you laugh or maybe something disturbing, but that got too dark. It was just a back and forth argument as usual, just me and myself, whether to read what I've written or leave them back on the shelf. But aren't some poems drawn out from a real life event? Also, this is my therapy and usually where I get my best content. So I decided I'd read you the latest one which was written. I have only 4 minutes, it's all I could fit in. So I hope not to disappoint or may land up anyway, but I'll take my chances and I will say what I have to say. So this is the second part, don't read too much into it. Happiness just isn't for me. Wait, I need a really bassy voice to say this to add more emotion. Happiness just isn't for me. If I got excited or carried away as a kid, I was yelled at. I got scared to laugh out loud because then I'd get a whack. I was told if I ran around, I'd hurt someone, so I just watched as the other kids had fun. I'd laugh at a scandalous joke that was on TV. I'd be questioned severely on my beliefs and my spirituality. There was a time I cracked an innocent joke as a child, got a beating because the joke apparently was not mild. When out with family at other guests' house, I preferred to chill with the other kids and not sit with the adults. Was, however, later mocked at for being too immature and enduring other insults. Over a period of time, you accept this as your new reality and hide the trauma you've grown up because it's absurdity. At times, I'm scared to be happy and just to be me because I feel I'll be punished later by somebody. How can anyone be able to accept the person I am when I myself don't know who I am? I envy those who are just fluent with who they are while I struggle to fit in but from afar. So now I laugh while I sit silently in the corner, enduring others' feats as crowd's favorite entertainer. Maybe it's just a phase, or maybe I'm dramatic, just maybe. But as of now, all I feel is that happiness just isn't for me. Thank you. David, guys, David. Man, all of you first time was okay. Just, can you guys just please? That's really, really, really good. Thank you so much for sharing, for finding the space to talk about things that you want to talk about, because this is what the point of all of this was. So, guys, one more time for David, please.
शादी शादी पे आते थोड़ा, ठीक है. Also, two of my friends have come, out of which one did attend the wedding. So I was kind of waiting for this time. थोड़ा push करके, can talk about these things. But I was telling you, right, alcohol can change everything, right? Because how do I know? Because I saw it. Never seen it before. But I want to ask both of you. You guys attended the Punjabi wedding, right? You were talking about. Was your only memory of it just phases, or do you remember the whole event or how it went or everything? Whose wedding was it? Was it a family thing for you guys or like a friend? My friends. Okay, okay. So did you have to do things? Did you have to work and stuff, or you were like? So it's like this wedding. Their family was convincing us to drink. Oh. You must. Wow. See, this has never happened in a Gujarati wedding. They'll just be like, have shots and guava in it. That's max we can do. So this wedding, I told you, it was my friend's ex's wedding. So this is me, this is my friend, and we had a third friend, okay? So just to introduce our third friend, he's been a friend for a couple of years now. He works in the social sector, and he doesn't do anything. By anything, I mean anything legally illegal, kuch nahi karta wo. He's like this guy who's just hit 30, and he's just focused on doing things in life, okay? And because every time he starts a sentence, he says, "Mere time pe," so we call him Dadaji, okay? So for your reference, it'll be easy. There's Dadaji, there's X, there's me, okay? 3 of us. And then other friends were there, but like this, I'll tell you why alcohol. So when we reached, there's a Mehndi function. Like you said, there's alcohol in every event, which I didn't expect. I was like, Mehndi ke liye kyun rakhenge? But tha, chahiye, ठीक है? And we all got so drunk and all of us got Mehndi. Abhi mera nikal gaya hai, but we all basically just went wild and got Mehndi. But it was really cool because again, there's a DJ, there's music, it was near a pool side, all of that. So as soon as we went there, we were exerted with this one, bahut wo tha journey and all of that, we all came. But we were like, free bar, you know, so let's do it. So we did, and also nothing to do, right? Because Mehndi, we did our thing. Friends busy, all of that. So we were like, theek hai, apna karte. That's it. I passed out after that because I'm 27 now. I can't like drink when I was 18. So I drank a glass of wine and I was like, done. How many of you don't drink? Raise your hand. Okay. You attended the wedding and you didn't. Okay. This is most people. This is great. Now, none of what I tell you will make sense to any of you because you guys don't drink because of how it works. But I drank a few white wine. ठीक है मेरा हो गया. Lady हम लोग सो गए. उठ के we had a cocktail, which was actually the place to drink. ठीक है? They did an entire event so that they could get people drunk, and it was really fancy. Okay, really fancy. We went to this place called Noor Mahal, which is somewhere in Haryana. Beautiful, beautiful mahal. You know, like nice place. It felt like a wedding. Like parts of it felt like it was a movie shoot because it's so like what, and parts of it was like okay. We're coming back to reality because I remember that uncle I was telling you. यहाँ पे भी थे वो uncle. So we cocktail we went and I was anyways very dazed. So I was like, whoa, dude, I can't. I need to take a break. This 27-year-old body doesn't have it in it to go ahead in life. So I was like, मैं थोड़ा chill करता हूँ, आराम से पीऊँगा. I'll keep drinking water because I've heard that helps. But मेरे बाकी दोस्त हैं, ठीक है? Now this friend whose name is X, he drinks, he's chill. Dadaji doesn't do anything, like I told you, right? But for some reason, he got very encouraged. Like, उसकी शादी try करते. तो पहले तो हुक्का है. हुक्का भी था. By the way, I don't know if I told you. It's normal apparently to have hookah in a wedding, okay? Because the last time I remember hookah was in Bangalore in my college days, where the hookah place got shut because it was illegal. And now they're at weddings. So they found a new place to do. तो hookah, and he's not done anything. तो हम उसको सिखा रहे, ठीक है, कि कैसे क्या करना चाहिए. वो crazy हो गया वो. He's just taking 2 puffs and he's waiting and he's leaving town. He's like, dude, kuch to ho raha hai, dude. And I'm like, it's so cute, right? Like a 30-year-old guy. You've done this all this in 12, probably degree, you know. This is very cute to see him. And we're like, tu karte rahe, dude. Tu kar like so. And we found this one guy who kept coming and helping us at every venue, at every place. This one dude was helping us. We like blink, we sit on a table, we blink eyes, सामने 2 hookah table already, 2 hookah pot already है, he's like, sir, सब ready कर लो आप. And he's encouraging this guy. So my friend's like, okay, we'll start there, ठीक है. फिर slowly उन लोगों ने चालू किया to drink, okay? And this friend, Dadaji, went out. He started drinking a little bit, then we all went to a dance floor, we were dancing.
again, not normal for me, but normal for the wedding, where people just serving alcohol while you're dancing because you should have fun. And they started coming with shots. And the minute we took 2 rounds of shots, so now they realized ye log lete rahenge. So they kept bringing shots. And I have done this enough, okay? Like, I've taken care of my friends enough when they're drunk. So I'm like, ye line hai mereko pata hai. 2 more rounds of alcohol gone. Like, people are going to be there. But these 2 friends of mine were like, why not? I mean, it's one person's story you could understand, right? I mean, his ex is getting married. So, and the other friend just wanted to try. So he's like, okay, let's see. So they got really drunk. And that's why I tell you there's a big difference, because I didn't drink that night. But I had the most fun just watching my friends lose their mind drunk, not able to stand, not able to like, and they're dancing, they're jumping, okay? There's nothing, there's no music. And he's like, nachna yaar, nachna. And this is Dadaji. Out of all the people who doesn't, like, how do I even describe? He's someone who'll just keep to himself. वो अपना काम करके निकल जाएगा. He's very like, when you meet him, you're like, oh, he's so like calm. That night, he was a rager. Like, sides to him that I haven't seen in 5 years. और इतना मजा आया because he never gets drunk. So I was like, if you have done it at your own loss, why shouldn't I why shouldn't I do it? तो एक के साथ तो वो चल रहा था और उसका तो he got 2 out, so we were like taking care of him. Dadaji was killing it. He's like 2 बज गए, ढोल वाले का आया 2 बजे रात को. It's like ढोल वाले चाहिए मेरे को. And we were literally sitting at this one place where like, I want people to come play ढोल. And then we played music for him. और वो झूम रहा है, नाच रहा है. And it got so exciting because I was like, this is what you should do. For people who don't drink, you guys, this is normal, I'm assuming. If your friends drink, you've seen all of them lose their mind. But at a wedding is even more fun because there is no control. These are adults without supervision who have the freedom to do whatever the fuck they want. And they choose to do this. Out of all the things. So I would recommend a tip. If you drink and if you're at a place where your friends are all going to be there, make sure they drink. So that you have a great party. शादी जिसकी भी हो, you also should have fun. यार मतलब शादी तो ठीक है यार, वो लोग अपना करते रहेंगे. So make sure most of you don't drink, so I'm assuming this is what your life is. When you're around friends who drink, you get to see all of this. But if you do get a chance, don't drink. Fuck the open bar. Watching your friends get drunk in an open bar is even more fun, like 10 times more fun than actually getting drunk. And I wish I could do it again, but there's only one ex. She got married already. My exes are not inviting me, so it's a bit tough. I'm not going to get this possibility. Like has any of your friends attended their own ex's wedding? See, it's not normal. Like I'm trying to explain to this friend, saying, bro, normal nahi hai. He's like, nahi bro, होता रहता है. किसके साथ होता है यार ये? कहाँ होता है? कितनी बार देखो समझा रहा नहीं होता यार ये. तेरे साथ ही हो रहा है. You're the only person I know in my life who will ever be invited to this because we were friends and it turned out like that. But cool guys. None of you drink, so good for you. My Jain parents will be happy knowing that none of you guys drink. God. Fine. I'll just call the next person. We'll come back. I have 2 more things. 3 more people. Okay? You can go home. Okay. 3 more people. How are you guys feeling? 3 more people, guys. 3 more people. Go lose it. Go mad. Can you please have Smaran? He's coming, guys. All the way from behind. All the way from behind. Hello everyone. My name is Smaran. This is my first performance. I will tell about myself. My name is Smaran. I live in Chembur, Mumbai. My dad has fishing business. I have upgraded it to import and export. So I will sell. If anyone like, you can contact me. I mostly like I like poem in Hindi. I like all about romantic and sadness. So today I am going to perform both poems. First I will perform romantic, then I will perform sad. Before performing, how live goes. Yeah, before performing एक शायरी से शुरुआत करता हूँ. Okay. तो शुरू करता हूँ. तुझे देखने को आंखें तरसती है. तुझे देखने को आंखें तरसती है.
तुझे हंसता देख हंसी भी हंसती है, तुझे देखने को आंखें तरसती है, तुझे हंसता देख हंसी भी हंसती है। कुछ अलग सा नशा है तेरी सादगी का, कुछ अलग सा नशा है तेरी सादगी का। अब तू क्या, तेरी परछाई भी मुझ पे जचती है, अब तू क्या। तो मैं पोएम शुरू करता हूँ। पोएम का नाम है वो एहसास तेरा। योर फीलिंग्स। वो एहसास तेरा, दिल मेरा कहे कि कब हो सवेरा, दिल मेरा कहे कि कब हो सवेरा। हर सुबह देखना चाहूँ बस तेरा ही चेहरा, तेरे सलामती के खातिर हर मंदिर हर मस्जिद पे झुकाऊ है मस्तक मेरा, तेरे सलामती के खातिर हर मंदिर हर मस्जिद में झुकाऊ है मस्तक मेरा। तुझसे ही है मेरे जीवन में खुशियों का बसेरा, वो है एहसास तेरा, वो है एहसास तेरा। कोई चुरा ना ले खुशियाँ तुझसे हर पल में धूप पहरा, कोई चुरा ना ले खुशियाँ तुझसे हर पल में धूप पहरा। मेरा प्यार है तेरे लिए समुंदर से भी गहरा, है जिंदगी है बंजर सी पर तेरे कारण हर पल है सुनहरा, है जिंदगी है बंजर सी पर तेरे कारण हर पल है सुनहरा। तेरे खूबसूरती की तारीफ़ों के लिए मैं बिछाऊँ शायरों का मुशेरा, शायरों का मुशेरा। वो एहसास तेरा, वो एहसास तेरा। इस प्यार में तू है जीती और मैं तेरे लिए रुहारा, इस प्यार में तू है जीती और मैं तेरे लिए रुहारा। तू अगर मुझे ना मिलती तो कहाँ भटकता मैं आवारा, तू अगर मुझे ना मिलती तो कहाँ भटकता मैं आवारा। तू दूर कहीं भी जा मुझसे, तू दूर कहीं भी जा मुझसे, मैं हर दम बनूंगा साया तेरा, मैं हर दम बनूंगा साया तेरा। इस दिल में सिर्फ तेरे लिए दिल से प्यार है भरा, वो एहसास तेरा, वो एहसास तेरा। हर तमन्ना पूरी है तुझसे, तेरे तमन्नाओं के खातिर मैं जी रहा, हर तमन्ना पूरी है तुझसे, तेरे तमन्नाओं की खातिर मैं जी रहा। नशा कुछ अलग सा है तुम्हारा, तुम्हारे नशे में मैं खो रहा, नशा कुछ अलग सा है तुम्हारा, तुम्हारे नशे में खो रहा। खुशियों का सूरज बिछाकर मैं छीन लूँ तुझसे अंधेरा, खुशियों का सूरज बिछाकर मैं छीन लूँ तुझसे अंधेरा। छीन लूँ गम तुझसे सारी, मैं बन जाऊँ तेरा लुटेरा, वो एहसास तेरा, वो एहसास तेरा। तुझे खोने के डर से मैं डर जाता हूँ, तुझे खोने के डर से मैं डर जाता हूँ। कैसे बेहतर बनाऊँ हमारे रिश्ते, बस यही सोचता हूँ। कुछ गलती हो जाए मुझसे और साथ छूट जाए तेरा, कुछ गलती हो जाए मुझसे और साथ छूट जाए तेरा। एक सांस में याद कर लूँ हमारे वो सारे लम्हे, फिर सांस छोड़ दूँ मैं मेरा, वो एहसास तेरा, वो एहसास तेरा। अभी एक सैड पोएम बोलूँगा, या एक सेकेंड। शुरू करने से पहले एक शायरी बोलता हूँ कि अक्सर लड़कियाँ हम जैसे लड़कों को गलत समझ लेती हैं कि मेरे पीछे पड़ा है, तो उसी के लिए शायरी कि गलत फहमी है तुझे कि तेरी खूबसूरती पे मरता हूँ, गलत फहमी है तुझे कि तेरी खूबसूरती पे मरता हूँ, भ्रम है तुझे कि तेरी अदाओं पे मरता हूँ, गलत फहमी है तुझे कि तेरी खूबसूरती पे मरता हूँ, भ्रम है तुझे कि तेरी अदाओं पे मरता हूँ। खूबसूरत अदाओं की कमी नहीं इस दुनिया में, खूबसूरत अदाओं की कमी नहीं इस दुनिया में। सच्चाई तो ये है कि मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। अभी एक सैड पोएम बोलता हूँ कि पोएम का नाम है कि तुझे कैसे भुला सकता हूँ, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। तू कहे तो तेरे पास आ सकता हूँ, तू कहे तो तेरे पास आ सकता हूँ, तेरी सारी बातों को सच मान सकता हूँ, दिन को रात रात को दिन कर सकता हूँ। साथ बिताना चाहूँ हर लम्हा मेरा, साथ बिताना चाहूँ हर लम्हा मेरा। अब तू ही बता तुझे कैसे भुला सकता हूँ, अब तू ही बता तुझे कैसे भुला सकता हूँ। तेरी जुल्फ़ों के साए में शाम गुजार सकता हूँ, तेरी जुल्फ़ों के साए में शाम गुजार सकता हूँ। तेरी आँखों की नमी में खुद को डुबा सकता हूँ, तेरे होठों के जाम सरेआम पी सकता हूँ, तेरे होठों के जाम सरेआम पी सकता हूँ। बस साथ बिताना चाहो, तू ही है इस दुनिया का हर कतरा मेरा। अब तू ही बता तुझे कैसे भुला सकता हूँ, अब तू ही बता तुझे कैसे भुला सकता हूँ। अब अपनी खुशियों को भुला के तेरी खुशी अपना सकता हूँ,
अपने हर गम को भुला के तेरा गम अपना सकता हूँ। है ज़िंदगी किसी की नहीं पर मैं तुझे दे सकता हूँ। है ज़िंदगी किसी की नहीं पर मैं तुझे दे सकता हूँ। तू है आसमान मेरा सारा जहान मेरा स्वाभिमान मेरा। तू है आसमान मेरा सारा जहान मेरा स्वाभिमान मेरा। अब तू ही बता तुझे कैसे भुला सकता हूँ। अब तू ही बता तुझे कैसे भुला सकता हूँ। तेरे चाहत के खातिर मैं बेकरार हो। तू पास ना हो मेरे तो खुद से मैं लाचार हो। है तेरे चाहत के खातिर मैं बेकरार हो। तू पास ना हो मेरे तो खुद से मैं लाचार हो। बस इतना याद रखना कि मैं ही तेरा प्यार हो। बस इतना याद रखना कि मैं ही तेरा प्यार हूँ। हर अंधेरे के बाद तू है सवेरा मेरा। घने अंधेरे के बाद तू है सवेरा मेरा। अब तू ही बता तुझे कैसे भुला सकता हूँ। अब तू ही बता तुझे कैसे भुला सकता हूँ। उस खुदा का तू है नायाब तोहफा मेरा। है ज़िंदगी जीने का सहारा मेरा। हर पल हर लम्हे का सुकून मेरा। तू ही अपना तेरे साथ ही हो हर सपना मेरा। तेरे साथ हंसता हो तुझे पाने को तरसता हो। अब तू ही बता तुझे कैसे भुला सकता हो। अब तू ही बता तुझे कैसे भुला सकता हूँ। जाते जाते एक और शायरी बोलूँगा। या वेरी प्रीटी फेस यार। तो एक रोमांटिक शायरी बोलूँगा कि तुझे देखकर वो आसमान भी ज़मीन पर आ जाए। तुझे देखकर वो आसमान भी ज़मीन पर आ जाए। अपने सारे बादलों से हर किसी को ढका जाए। तुझे देखकर वो आसमान भी ज़मीन पर आ जाए। अपने सारे बादलों से हर किसी को ढका जाए। उस सूरज की पहली किरणों के साथ स्वागत हो तुम्हारा। उस सूरज की पहली किरणों के साथ स्वागत हो तुम्हारा। कि वो खूबसूरत चाँद को भी तुझ पर जलने का मौका मिल जाए। तुझ पर जलने का First time, guys. First time. सर बहुत क्यूट है यार, मजा आ गया। मतलब he did a whole circle. He did love and heartbreak. अब तो ओपन माइक रखना पड़ेगा. I came back to love. That's all of us. It almost like today almost felt like mini Valentine Day. Not as much. एक था भी. Like I think it was October maybe or November, and I was telling those guys कि डिक्लेयर कर देते यार 21 नवंबर को ऐसा कुछ था क्योंकि सारे लोग everyone was like हाँ सब even without telling. Cool. 2 more performers. That's it. 2 more. Thanks a lot. Crazy energy. Okay, 2 more people. Keep clapping, keep clapping. Boom, bye. Last 2 people. Can we please have Sakshi? All the way from 3rd row, guys. All the way from 3rd row. Keep clapping. हेलो हाय। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ सर। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। मैंने आपको पहली बार स्पोकन में परफॉर्म करते हुए देखा था और तब से मुझे हिंदी से दोबारा प्यार हो गया है। और मैंने आपकी सारी कविताएं सुनी हैं जो भी आपने कही है ना। मैं ह्यूज फ़ैन और ये बिल्कुल प्लान नहीं था परफॉर्म करना, बट मैंने कहा आप आए तो मैं जाके बोलने वाली हूँ। मैंने मतलब मुझे पता है कि आप आईटी में काम करते थे TCS में एंड यू लेफ्ट योर जॉब फॉर दिस। सो उससे इंस्पायर होके आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग। मैं लाइक बहुत पहले से रही हूँ बट इतना कभी करेज नहीं था कि मैं परफॉर्म करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि बहुत देर हो गई है चीज़ें संभालने के लिए, समेटने के लिए। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देर नहीं हुई है। तो क्या हो गया अगर तुमने पहले मन की नहीं सुनी? देर नहीं हुई है, अब सुन लो। तो क्या हो गया अगर खुद से प्यार नहीं कर पाए तुम कभी? देर नहीं हुई है, अब कर लो। तो क्या हो गया कि तुमने किसी का दिल दुखाया सालों पहले और उससे माफ़ी नहीं मांग पाए तुम? देर नहीं हुई है, अब कर लो। तो क्या हो गया कि इतने सालों से तुम उस नौकरी को छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पाए तुम? देर नहीं हुई है, अब छोड़ दो।
तो क्या हो गया कि दुनिया घूमना पहले शुरू नहीं किया तुमने क्योंकि मन की कहाँ सुनी है अभी तक तुमने, अब घूम लो। तो क्या हो गया कि अब तक रिश्तों को निभा नहीं पाए तुम, देर नहीं हुई है अब निभा लो। तो क्या हो गया जो पहले तुमने अपने ख्वाब की आवाज़ को दबा दिया था, देर नहीं हुई है अब सुन लो। तो क्या हो गया कि जो खुद से ही 1000 झूठ बोले हैं तुमने, देर नहीं हुई है अब सच बोल दो। तो क्या हो गया कि पहले तुम खुलकर हंस नहीं पाए, रो नहीं पाए, अपने मन की बात कह नहीं पाए, अपने मन की कर नहीं पाए, कि अपनों से कितना प्यार करते हो ये उन्हें तुम बता नहीं पाए, देर नहीं हुई है अब कर दो, अब कह दो। तो क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, ये कर दिया होता कि असमंजस से निकल कर अब वो कर दो जो नहीं कर पाए तुम। तो अगर खुद को पहले जान नहीं पाए तुम, तो देर नहीं हुई है अब जान लो, क्योंकि अब तुम्हारे समय चक्र के बदलने का समय आ गया है। और हाँ, अब भी देर नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Sakshi. This was on self-love. I think we should do another one on self-love also. That's been a nice, very new thing that we all been talking about, and that's very nice. Thank you so much for performing and sharing. We have the last person, but before that, I have to wrap up the wedding. तुमको ऐसे आधा ही छोड़ दिया मतलब मैंने कि हो गया खत्म बस वो रात, उसके बाद याद ही नहीं है अगले 2 दिन क्या हुआ. It was a 2-day wedding. Second day was the main event. First day was cocktail. So second day we woke up because I didn't drink a lot. I was like, oh cool. Both my friends. It's like this. पानी, बहुत धूप है, बहुत लोग हैं, बहुत आवाज़ है. और दादाजी पहली बार. तो उसको तो एक्सट्रीम फील हो रहा है. He's just like this. कहीं भी सो जा रहा है वो. हल्दी चल रही है. हम लोग हल्दी का फंक्शन हो गया तो बेड पड़ा था, right? He went and passed out there for a while. हल्दी चल रहा है साइड में. I think no, he's like, I will do what I want to. तो अगले दिन शादी थी. Now, before I end, the whole point of doing this was many other reasons also, but this thing is very important, okay, guys? Because I have a petition to do. Like we spoke about so many things, right, about wedding, but I have a big petition. So we were supposed to dance, right? Dost ki shadi. We want to dance. We want to, like, it'd be crazy. And there was no sangeet. There was cocktail, which you guys know how that went. So we danced there as much as we could, but like shadi, yaar, shadi. And the thing is, this whole shadi is anyways a very patriarchal thing, and many things around it also patriarchal. Like only the guy's side can have a barat, which is very rude. Just telling you, because when I went to my friend's wedding, we wanted to dance at her barat, but they were like, "Nahi, ladke naach se." So this is my petition. Okay, hear me out. We should have barat from both the sides. Okay, the guys should come from one side, girls should come from one side. Center में मिलो, ठीक है? Then the guy side are making a semicircle, the girl side make a semicircle, everyone's hyping them, and the guy and the girl battle it out. Yeah, no one wins. It's just a battle. It's like shadi, yaar, fuck, I'll take you down, I'll take it. You know, like, at the end of it, oh my god, shit. What did I get into? My bad, guys. I forgot I was sitting in a room full of children. Fucking cat. This feels like my school all over again. Take you down in dance movements. Okay, I don't know why I'm doing this. It's gonna make it worse. But point is, just imagine the hype. Okay, you're dancing from here. Like we'll show you. Anyways, guys, girls, this always happens, right? At every wedding, guys, girls, all of that. So I think we should have this petition. तुम लोग भी देख लो कैसे करना है तुम लोग को. I'm trying to push all my family members. Obviously, they said no, but I'm trying. Not for me, but like family members who was getting married. I was like, करवा लो यार, बहुत मजा आएगा. Then obviously they said no. I will try it at mine. I don't have any hope for the next few years, but if I do, I will try. But you guys have to make me a promise that you will try to get this shit done. Because maybe in the next 2 to 3 years, just imagine, dude, like I'm waiting for that, like heated, just surrounding all your friends, everyone's hyping you up and you're like, yeah, I'm getting married to this person and I'm gonna, I can't even say take them down now. I'm gonna rip them apart in dance just before we get married. It'll be really cool. I don't know why no one has ever thought of it. Or I'm sure people have thought of it, but they were like, nahi. Only 1% dances. So yeah, that's all.
That's all. The wedding was great, but obviously we didn't get to dance because we were like, yaar, Parat mein ko naachna hai, nahi hua. And sometimes all of these like older people are like, it's okay, dance with them. And I'm like, no man, that's not the point. I want to bring my friend along with me and like get her maybe a horse or a car or I don't know what all people use. But I think this has to happen. Just to create like a equilibrium between the energy. Because it's too much otherwise. Why so much for guys? I don't understand. That's another conversation. We'll have another open mic. Like guys are so like, but okay. So you guys promise, yeah? You guys will try? At least try, yeah? Maybe in the next 3 to 5 years we can see this whole battle come out. It'll be great. Much better than pre-wedding, guys. That also reminds me, if you want to get your pre-wedding done, I told you. You can follow me on Instagram @YSOHARSH. I'm actually giving it. Usually I'm like, nahi karna chahiye, but I'm like, it's yeah. So if you want to follow, depends when your pre-wedding is, but we'll figure it out, guys. Don't worry. Pre-wedding, post-wedding, whatever, maternity. Okay, too far. Too far. okay, too far. It was fun, but I think all in all, attending a friend's wedding, because I hadn't attended one, because luckily I'm in that friend circle who no one got married in that so far. एक एक करके अभी सबकी शादी हो रही है, तो it's very nice to be able to be at this place, because I remember we were all this Bharat thing got over. Okay, I'm like एक दिन आएगा ये, but then she came in and we walked together, and there was this one beautiful place where all of us just looked at them, and we just had tears because it was so beautiful to suddenly just see. I mean, I don't know these two people. I mean, I know my friend, but like, I don't know these two people together, right? They found a space for themselves, and like how we listen to poems about someone telling someone something. You don't know who that other person is, but you imagine maybe this person was in love, said these things. So I think it's a very beautiful place to be at a wedding, even though my first half just sounded like I was cynical and weddings shouldn't ever take place. I still agree with that, but I think weddings are beautiful, and I think that it's amazing how celebration brings people together, because like many other occasions you do, but this is so centered and focused around this one person, and all of us were so, I mean, we couldn't believe this happening, because this is one of those friends who you've done all kinds of shit with, and you're like, this person's getting married, dude. Like, so it's really cool that you form these relationships over the years, and then you grow over time, and then it's time for them to start this new chapter of their life, and then you're just there. I think it's really cool, and I think like it goes out to any kind of celebration where you do it with people, just like this open mic also, right? Today was I felt like it was a celebration. I don't know about you guys. I felt like it was a great celebration of a lot of things, and I think that's what's exciting about something like weddings, that it just, alcohol or not, guava juice or not, just the fact of everyone getting ready together to go do this one thing, I think is very exciting. So like all in all, I think it is a great experience, and like I love weddings as long as it's not mine. as long as I don't know if it'll ever happen, but like right now I'm in that place in life, because we have different phases, right? Sometimes you choose to be in a relationship, then sometimes you're like, sometimes you're like, actually with marriage you can't do that. You choose to be married, you choose to want to get married or not. But I think it's an amazing thing. How do people blend their like culture and history and house and themselves, their personality, everything just comes together into this one space of home or space of each other, of comfort. And I think it's great. Love in that sense is absolutely pure and beautiful, and I'm glad that it exists in the world that we're living in, because it's very hard to find any kind of love today. So it's really cool that people are shit man, I contradicted myself from beginning. It's really cool that people are getting married these days. Because I began by saying, why? Okay, I found my answer again. I said therapy hai ye, mere liye. So I found my answers. Thank you so much for being an amazing listener and a friend and my therapist, who feel bad if I tell her I've started therapy somewhere else. She's like, where? I'm like, stage. And she's like, what? Don't do that. Okay. So yeah, just like that, I was very grateful, very emotional, extremely emotional, but very grateful that I got to witness this with one of my really good friends, with other friends who added to this experience like no other. Just like today, I'm very grateful that all of you came. Thank you so much for coming today.
It's fine, guys. You're clapping for yourself, but cool. Not for me. For yourself, only you're clapping right now. So I'll say it again. If you guys choose which side you want to be. Thank you so much for coming today and sharing and like being. Oh, same. It's fine. I'm repeating. हम बाद में कर लेंगे यार. अकेले भी. Okay. So I'll come back. I'll finish it up. But we have one person, okay? And that one person is someone you've been hearing about a lot today. Big fan, sir. Big fan. We met here, I'm sure, maybe 3-4 years back. We must have met here only at an open mic when we were only. That poem. Wow. So we were just like this, okay? We were 20-25 of us who every Monday try to make it. And there was no videos, there was no channels, there was no organizations, there was no. We were not performers, we're just poets. We're not like people trying to appeal to an audience. We're trying to appeal to each other, to ourselves. We're trying to like reflect. It was a great time. And I'm so glad that I met him then. And like, how many of you have ever seen his work? You guys know what I'm talking about. For those of you who didn't, man, the next how many more minutes are going to be kick-ass, okay? He's also going to be recording this. So there's pressure on you. He's going to perform. There's pressure on you to be an audience. So you figure out which, what, how, why, okay? This is the last performer. We may or may not meet. But love will continue to exist. People will still continue to get married. So I hope I see you at some corner where there's a Bharat where both the sides exist. But until then, we have a last performer. You've been a fabulous audience. Thank you so much for coming. Last person is going to be recording. Last person, going to be recording. You have to go crazy, okay? Go mad. You know what to do. Last person, go wild. Start clapping. Please start clapping. Please start clapping. Can we please have Rakesh Tiwari? Go mad, guys. Go mad. अरे बाप रे, यहाँ के सब अलग लगता है। मतलब सही में, मतलब इसने सबकी तारीफ की यार कि इसमें इसकी कोई गलती खता नहीं। हर परफॉर्मर को लगा वो शादी का फूफा जी है जो बहुत फेमस है, पर फूफा जी कौन है किसी को पता नहीं। मतलब बहुत बहुत गजब की महफिल है। ऐसा लग रहा है कि सुनाने वाले सूफी हैं, सुनने वाले सवाली बैठे हैं। सोमवार की रात है, आप और मैं कविता सुना रहे हैं। सोचिए हम सब जिंदगी में कितने खाली बैठे हैं। मतलब यही जो ना वो बेचारा बताया जा रहा है शादी क्या। मैं जानता हूँ कि उसको बताने की हसरत थी, पर तुमने क्या झेला हमको बताने की क्या जरूरत थी। मुझे लगा एक पॉइंट के टाइम में बोल देगा ओके गाइस, सो साइन अप फॉर shaadi.com। ब्रांड डील चल रहा है क्या भाई। और कौन है फर्स्ट टाइम परफॉर्मर? काहे के फर्स्ट टाइम हो यार तुम लोग। मैं और सजल बैठ के आगे तो हमारा फर्स्ट टाइम ये होता है, गुड इवनिंग सजल, हर्ष एंड ऑल द पोएट्स। आगे ना अलग अलग फील कर रहे हैं, सब आके किल कर रहे हैं, अब अलग ही चल रहा है। लेकिन चलो फाइनली इसी बहाने सब मिल गए हैं, कविताएं हैं पढ़ी हुई। तो पापा हमेशा सही कहते थे कि तुम्हारे लिए तालियां बजे, महफिल सजे, ऐसे मंजर कभी कभी ही आते हैं। बनना है तो इंजीनियर बनो, कवियों को सुनने सिर्फ कवि आते हैं। And look at this, you guys have been such a participative audience. Almost all of you have been here. तो वही है, लेकिन आए सब बैठे और इतने दिन के बाद लाइव परफॉर्मेंस देखी है ना। मतलब लाइव देखे हुए पता नहीं कितने लम्हे बीत चुके हैं। अभी जब ट्रेन में आ गए थे तो मैंने एक चाचा को मास्क निकाल के छींकते हुए देखा और मुझे लगा हम कोरोना से जीत चुके हैं, हम कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत स्पेशल मंच रहा है मेरे लिए। तो मेरी जो 2 कविताएं थी जिनके बाद जिंदगी चली आगे बढ़ी। मतलब मैंने कभी समटाइम्स आई फील कि नहीं यार मैंने सही में बहुत अलग अलग चीज़ों पे लिखा है। मिसिंग पोस्टर्स पे, गूगल गांव पर, डेमोक्रेसी, मेंटल हेल्थ, सब चीज़ पे लिखा। मतलब यहाँ तक कि कागज़ पे, अखबार पे लिखा है। और इतने सालों बाद जाके पिछले ही हफ्ते प्यार पे लिखा है। एंड देन दिस हैपेंस एंड देन ऑल ऑफ यू कम एज इफ यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड। अभी लिखना था प्यार पे। तो 2 कविताएं हैं। फिर नहीं कहना की बात किसी ने बताई ही नहीं, खबरदार जो किसी ने लाइट दिखाई। तुम चले ही जा रहे थे, हमको लगा था एक टाइम के बाद ये पहुंच जाएगा कि हाँ इसके बाद हम सब सुहागात पे बस लेके गए।
मतलब एक टाइम मतलब था कि जितने बार आया था वो महेंद्र कपूर याद आ गया था, भारत की ये कहानी महाभारत चल गया। तो चलिए, तो पहला जो है वो कविता जो है वो प्यार से ज़्यादा जो है टूरिज्म की नीड से निकला है कि कहीं घूमने ही नहीं गए, तो कविताओं के ज़रिए हमने सोचा कि चलिए घूमते हैं, चलते हैं, कि हम मिलेंगे। इस कविता का नाम है कि मुझे लगता है कि हम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, चलिए चलते हैं, साथ में चलते हैं। वैसे ही बजट कम है तो कविताओं के ज़रिए घूमते हैं अपन। अलसाई हुई अंधेरी रातों में अदरक वाली चाय की कप कप कपाते हाथों में, जहन में गजब के सवाल ख्याल आते हैं कि आदत है मेरी या मेरा कोई फितूर, हमें लगता है कि एक दिन हम मिलेंगे ज़रूर। फिर यही ख्याल लिए दबी आंखों से आसमान की तरफ चलने लगता हूँ, मैं हर रात ख्यालों के शहर में तुमसे मिलने के शहर बदलने लगता हूँ। और फिर मुझे लगता है कि हालात चाहे जैसे हों हर हाल में मिलेंगे, मुझे लगता है किसी ना किसी दिन हम नैनीताल में मिलेंगे। क्या बात है। नैना झील के किनारे बैठकर नज़में लिखेंगे बड़ी शौक से, पूरा शहर निहारेंगे बैठ के टिफिन टॉप पे, और फिर वक्त का तकाजा कहकर रुक जाएंगे किसी बहाने, सितारों का आसमान होगा और अरिजीत के गाने। क्या बात है, क्या बात है। या फिर घूम लेंगे बाजार या सड़कों की मोड़ पे, या फिर बिना मतलब के बेवजह की तफरी मॉल रोड पे, और फिर जब घूमकर सारे शहर की नब्ज हम थाम लेंगे, नैना देवी के मंदिर जाकर एक दूसरे को मांग लेंगे। फिर जाने कब कहाँ किस हाल में मिलेंगे, पर मुझे यकीन है कि एक दिन हम नैनीताल में मिलेंगे। पर वादियां ही क्यों, अगर तुम्हारा ये सवाल है तो मैं तुमसे कहूँगा या पूछूंगा कि बनारस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कि बनारस वो जगह जहाँ पहुँचकर याद ना आए बम्बई, न वहाँ की सड़कें लंबी चौड़ी, बस राम खिलावन की लस्सी, आलू पूड़ी और कचौड़ी। क्या बात है। जहाँ पहुँचकर लगे कि यहाँ पहुँचते नहीं तो और करते क्या, इसी बहाने सफर ना करने के लिए डरते क्या। जहाँ बात होगी मोक्ष की, अनहद के एहसास की, वहाँ घाट किनारे बैठकर पढ़ेंगे किताबें डूबे दिव्य प्रकाश की। जहाँ जाकर ही समझ आएगा कि उनकी लेखनी को लोग पढ़ते हैं पर समझते बहुत कम हैं, तभी जान पाएंगे कि उन्होंने क्यों लिखा था कि बनारस आते सभी हैं पहुँचते बहुत कम। क्या बात है, क्या बात। कि कहते हैं ना कि ये वो शहर है जहाँ लेकर अपने जज्बात आना चाहिए। बनारस एक बार अकेले तो एक बार किसी के साथ आना चाहिए। क्या बात है। पर कहते हैं कि अगर मिलना है तो उसमें तुम्हारा मशवरा भी होना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हम मिले तो उस शहर को भी गुलाबी होना चाहिए, जहाँ पहुँचकर मैं कहूँ कि ये रजवाड़े, ये किले, ये सब कुछ है मैंने तुम्हारे लिए जीत लिए। यही सारी बातें करेंगे हम जयपुर में गुलाब जी की चाय पिए। जहाँ दिल निकलना ही ना चाहे ऐसे सिलसिले से, ढलता हुआ सूरज देखेंगे नाहरगढ़ के किले से। जहाँ उंगलियां फंसाकर तुम्हारे कप कपाते हाथ में, कह दूंगा ये दिल की बात में, क्या असल जिंदगी में भी रह सकते हैं ऐसे ही साथ में। खैर यही सवाल है, सवालों का दौर होगा। आज सोमवार है, आज का शहर कुछ और होगा। जहाँ फिर से मैं कहूँगा कि आप ही कहीं ले चलिए हुजूर, या नैनीताल या बनारस या फिर कहीं दूर। आदत है मेरी या कोई फितूर, पर मुझे अब भी ये लगता है कि किसी ना किसी दिन हम मिलेंगे जरूर। क्या बात है। बहुत अच्छा झेल गए आप लोग। ये बहुत गजब बात है। ये वो जगह है ना जहाँ लोग कहते हैं कि यार महफिल आओ, महफिल बनाते हैं, महफिल बनाइएगा। यहाँ तो हमारे ससुराल से फ़ोन आता है कि जीजा जी नींद नहीं आ रही, कविता सुनाइएगा। मतलब सही में, मतलब मुझे ऐसे साले मिले हैं जिनको मिलने के बाद, हालांकि मेरी त्वचा से मेरे शादीशुदा होने का पता नहीं चलता, पर मुझे ऐसे मिले हैं। हाँ नहीं, संतोष पापा की ऐड ऑफर हुई थी, लेकिन मुझे ऐसे मिला, मेरा ससुराल नागपुर का है ना। नहीं तो आप आई तो मुझे पता ही था कि आप बोल देंगी, कि नागपुर वाले बोलती हैं, चुप करा देते हैं। तो मेरे को ऐसे मिले जिनको मिलने के बाद मुझे पता चला कि इस प्रजाति को साला क्यों कहा जाता है। तो मतलब हद ही है, छोड़ो। तो बहुत कुछ मैंने जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे मैंने उनसे कहा कि अगर सूर्यवंशी लगी है थिएटर में, बोले हाँ, और आपके डेबिट कार्ड पे 1-on-1 ऑफर भी तो है। मैंने डाउनलोड कर ली। जिंदगी में बहुत कुछ जो है पाना खोना लगा रहता है, तो कोई किसी शख्स को पाना और खो देना फिर कैसा होता है।
सो उसको मैंने बांधने की कोशिश की, तो देखते हैं ये सपने संजोना, हंसना रोना लगा रहता है, कितनी आसानी से कह दिया था तुमने कि पाना खोना लगा रहता है। तो आज सबको बताऊंगा वो किस्सा जो कभी बताया था तुम्हें कि किस तरीके से तुम्हें कमाया था और फिर गवाया था तुम्हें। क्या बात। मैंने पाया था तुम्हें, मैंने पाया था तुम्हें जैसे संसार में आते ही शरीर पाता है पंचतत्व को, जैसे बोध वृक्ष के नीचे बुद्ध ने पाया था बोधिसत्व को, जैसे मुसाफिर जो लंबे सफ़र में मुसाफिर पा ही जाते हैं किसी लंबे साध को, जैसे सितारे पा जाते हैं अपना आसमान होते ही रात तो, जैसे जैसे सती ने शिव के साथ पा लिया था सर्वस्व को, जैसे पांडवों ने पा लिया था खांडव वन में इंद्रप्रस्थ को, जैसे बच्चे पा जाते हैं त्योहार आते ही मनपसंद तोहफा, जैसे शायर पा जाते हैं महफिलों में छुपकर लिखने का मौका, जैसे कलाकार पा ही जाते हैं रंगमंच को, जैसे हर दिवाली अलमारी में हम पा जाते हैं स्मृतियों के संच को, जैसे जैसे हिटलर ने भी पा ली थी अपने मकसद में थोड़ी सी कामयाबी, जैसे रिश्तेदार पा जाते हैं हर रिश्ते में कोई नुक्स कोई खराबी। मेरे पास जो अपने हिस्से का वक्त था मैंने वो दिया था तुम्हें, पर कुछ तो देना रह गया होगा, तभी तो मैंने खो दिया था तुम्हें। क्या बात। मैंने खोया है तुम्हें, जैसे बहस करते हुए खो जाती हैं बातें जो कहनी थी, जैसे तस्वीर लेने की फिराक में खो जाता है वो लम्हा जिसकी तस्वीर लेनी थी, जैसे लापरवाह मुसाफिर खो देते हैं सफ़र में अपने मतलब का सामान, जैसे सितारे टूटते ही खो देते हैं अपने हिस्से का आसमान, जैसे जैसे सम्मान खोकर संसार छोड़ना पड़ा था देवी सती को, जैसे पांडवों ने भरी सभा में खो दिया था द्रौपदी को, जैसे बच्चे बड़े होते ही खो देते हैं अदब दुआ सलाम, जैसे शायर कागज में लिख कर खो देते हैं अपने लिखे सारे कलाम। क्या बात। जैसे निर्वाण के बाद संसार ने खो दिया था बुद्ध को, जैसे सर पे पिस्तौल तानते ही हिटलर ने खो दिया था दूसरे विश्व युद्ध को, जैसे जानबूझकर होश अपना खो देते हैं शराबी, जैसे किसी बुरे दिन पड़ोसियों से भी खो जाती है घर की आखिरी चाबी। ये मुझ पर तंज कसने वाले, ये बेवजह मुझ पर हंसने वाले, ये नहीं जानते कि सपनों की माला में हर रोज संजोया था तुम्हें, कैसे तुम्हें बताऊं कि कैसे खोया था तुम्हें। पर ये किस्सों का बाजार है, किस्सों का बताना लगा रहता है, मेरी छोड़ो अपनी बताओ, खोना पाना लगा रहता है। चलिए अभी आखिरी है, अब आप बताइए कौन सी, मतलब इस हिसाब से मतलब अब इस यहाँ से कोई हटा ही नहीं रहा तो पढ़ लेते थे। आखिरी कविता अब या तो वो ये हो सकती है कि मैंने लिखा था कि तुमसे मिलना और एक रिलेशनशिप के मुझे लगता है 4 स्टेजेस होते हैं, तो उसको लिखने की कोशिश की थी इन रिदम। एंड जो दूसरी कविता बहुत स्कैंडलस है जो मैं कॉलेजेस में परफॉर्म करता हूँ, पर मुझे लगता है माहौल बन जाएगा, बहुत ही संस्कारों से लिखी हुई कविता थी जिसका नाम था माल फूंकिए। क्या सुनाया जाए? तुमसे मिलना सुना दे, माल फूंकिए में आर्यन खान मतलब सही हवाओं का रुख नहीं है, हमारे पापा शाहरुख नहीं है। और उसकी 2 लाइन ही खाली सुनाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ कि क्या गलत है क्या सही न सवाल पूछिए, जिंदगी कठिन बड़ी है माल फूंकिए। सो तुमसे मिलना सुना देता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ, जैसे कि उसके बाद जाना ही है, नहीं जाऊँगा तो वो निकाल फिर आके शादी किससे सुना देगा। सो मुझे लगता है कि रिश्ता 4 हिस्सों में चलता है या 4 स्टेजेस आते हैं। तो शुरू होता है कि तुमसे मिलना जैसे पुरानी दिल्ली की सड़कों पे चलना के चलने से ज़्यादा तो गिर के संभलने पे बहकी सी राहों को तकना के तकने के एवज में रास्ता भटकना, कि भटकना भटकते ही मिलना किसी से लगे के लिखा था ये मिलना उसी से फिर बातें सुबह शाम करना, शामों सहर बस यही काम करना कि करने को कुछ भी न रह जाए बाकी, बस एक झलक और 100 बरस काफ़ी, बरस का लम्हों में ढलने के जैसा, तुमसे मिलना खुद से मिलने के जैसा।
मिले हो तो साथ रहोगे भी। तुम्हारे साथ रहना जैसे सौर मंडल के सितारों में बसना, झुलसती धरा पर हो सावन बरसना, बरसना भी ऐसे के भीगे मीनारें, मीनारों के अंदर सब गिरती दीवारें, दीवारें गिरे की ऐसे गिरे कि गिरकर ही सुलझे उलझन सिरे की, सिरे से सुनाना फिर किस्सा कहानी, कहानी जो तेरी और मेरी ज़बानी, ज़बां से अर्ज हुए आदाब के जैसा, तुम्हारे साथ रहना कोई ख्वाब जैसा। अब जो तीसरा स्टेज है वो आप आंखें बंद करके सुन सकते हैं। जिनके साथ हो चुका है वो याद करें, जिनके साथ नहीं हुआ है फरियाद करें। ये है तुम्हें चूमना। हाँ ये आंखें बोलोगे शालिनी। तुम्हें चूमना जैसे समंदर लावा जलजला एक साथ चख लिया हो, जैसे आंखें बंद करके अनंत आकाश देख लिया हो, जैसे कोई पार करे गुमनाम सरहद को, जैसे जलती ज़बां पे रखा जाए शहद को, जैसे उतरते जाएं लिबास के पैरहन, मई की गर्मी दिसंबर की सिरहन, जैसे भूखे के हलक में पहला निवाला, मदरा के प्यासे को मिले मधुशाला, जैसे इससे खूबसूरत इनाम ही क्या है, यही करना है काम ही क्या है। जैसे कोई कहानी जो बस चलती ही जाए, मनाली की वादी, मसाले की मैगी और अदरक की चाय, जैसे नॉर्दर्न लाइट्स की छुअन से रंग बदलता आसमां, जैसे कसौल की वादियों में रातों का धुआं, जैसे बातों से अब तुम्हारा दिल भर चुका है, जैसे सिर्फ होंठ बाकी हैं सब बिखर चुका है, गीली तार पर गिर के फिसलने के जैसा, मौसम का देर तक ना बदलने के जैसा, बर्फ का अपने पानी में पिघलने के जैसा, तुम्हें चूमना हर शाम समंदर का सूरज को निगलने के जैसा। और आखिरी में चन्ना मेरिया मोड़, तुमसे बिछड़ना, तुमसे बिछड़ना जैसे बादलों का फटना बेमौसमी बरसात में, बरसात जो दबे पांव आती है स्या रात में, रात जो अब एक सदी तक चलेगी, जलेगी हर लम्हा तो राख ही मिलेगी, मिलेगी जो राहें कभी भी कहीं पर भी मिलना कुछ कहना नहीं, पर नहीं अब तुमसे है उम्मीद बाकी, बाकी जो कुछ है तो वागदा खिलाफी, वादे जो लगते थे जैसे तराने, जैसे गुलजार ने लिखे थे रहमान के गाने, गाने गज़ल गीत कविताएं क्या ही सुनाएं क्या ही बताएं, बताने से ज़्यादा समझ लो तो अच्छा, हम यही हैं तुम आगे बढ़ लो तो अच्छा, अच्छे बुरे के फ़र्क को ना सीखने के जैसा, तुमसे बिछड़ना एक प्रेम कविता लिख कर नीचे अपना नाम न लिखने के जैसा। Thank you so much. कितने अच्छे लोग। स्टेज से रिहाई बाकी है, तुम्हें बता दूं दुल्हन की विदाई बाकी है। Oh shit, man, one more. Go on. मेरा हो गया. I'll just say one thing before I go, which was that I was going to say, but sir also wrapped it up very, very well. It's a dialogue from the movie Interstellar. जिसमें बोलता है कि love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of space and time. Maybe we should trust it, even if we can't understand it. And I feel like that's a great whatever Sir and whatever all of you said. Anyways, it felt like a mini Valentine Day. So I feel like the celebration of Shadi is in a way getting transcending through space and time, because they're going to create a new timeline of events in their life. So really happy that all of you made it here again. Big round of applause for everyone who performed. Thank you so much. Thank you so much for coming out, for expressing, for sharing, for being here, for talking, for sharing. I said that. We open mics usually on Sundays and Mondays, but check out the page for more. You can follow me on Instagram. I told you it's the letter Y SOHRSH.
Follow, like, share. Thank you so much for coming. Keep checking, keep attending live events, keep supporting live artists. It's very important at this point because all of us are live artists. We need to support each other. I just request you to sit here. Once we're done with this, we'll take a group photo once I come and sit down, and then ghar jao. If you like each other's performance, please do talk to each other. Figure out if you can create something. Thank you. Thank you once again for coming. I hope I'll see you soon. My name is Harsh. You've been an amazing audience. Thank you so much.